तो आगु को जीवा आगुरु किछिटा मु आपनको इन्फॉर्मेशन देवी हमर जो फाउंडेशन बैच और सेमेस्टर कोचिंग पे अपन देखुछंदी ओडिशा जुडिशियल सर्विस की जो भी स्टेट रो जुडिशियल सर्विस हो किंबा हायर जुडिशियरी एग्जाम्स करिका हो सेथरे आपनकर बेसिक लेवल टा किंबा फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग टा क्लियर हेतिबा दरकार जदि सेटा नहीं ताहले आपनको जहाँ भी हेले टिके इश्यूज हबो केते केते पिला अपन देखथिबे ताकू बहुत टाइम लागि जाय ओजेएस क्रैक करिया पई गोटे सेथरे जिंस थाय कि से माने जते बेले लॉ स्कूल रे पढुतांती तो ड्यू टू वेरियस रीजंस तांकर फाउंडेशन ता क्लियर ही न थाय लॉ रे ओके तेनु एज अ रिजल्ट सेटा परे तले आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम करिका दउचंती ओजेएस हला कि अलगा लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेथरे आपनको प्रॉब्लम होची ओके तेनु सेही सबु जो स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट रोची कि हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ता दरकार अछि कोर्स रो ओके लॉ रो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रो तो सेथि पे हमर ई फाउंडेशन बैच हो सेमेस्टर कोचिंग ए पार्ट हमर रोची ओके इट इज डिफरेंट अपन जदि कहबे ताले हमर जो ओजेएस बैच रोची ताठो एटा अलगा तो कौन डिफरेंसेस रोची और एई बैच ता कहा पाई एठी कौन फैसिलिटीज आपन को रोची दैट आई विल डिस्कस विथ यू तो एई बैच ता हमर जो माने क्लासरूम रे करिया पे चाहउचंदी भुवनेश्वर रो खंडगिरी सेंटर रे ही एटा रोची तो सेठी आपण क्लास रे आसी क्लासरूम रे कर परिबे 6 टा रु 8 टा रो टाइमिंग रोची संध्या बेले मींस आफ्टर योर कॉलेज टाइमिंग ओके एडवांटेज कोन रोची रीडिंग रूम आपण को मिलिबो सेठी विथ वाईफाई फॉर यू नो क्लासरूम स्टूडेंट्स तो आपण जदि किछि पढा पढी करिया पे चाहउचन निजरो ताले भी जाकी लाइब्रेरी रे बसी के पढी परिबे रेगुलर आंसर प्रैक्टिस रहबो आपण कांसेप्ट बुझाला आपण पूरा बुझिले तापरे हमें किछटा टेस्ट भी ता ऊपर वीकली आउ ओके मॉड्यूल एंडिंग टेस्ट करिका रहबो बेसिक लेवल रो स्टार्ट हो मु किछि जानली लॉ ऊपर तथापि ओके मो पा क्वालिफिकेशन अछि तेनु मते बेसिक्स टू पढिबार अछि तो एठु हमें बेसिक रो स्टार्ट करी कि पूरा एडवांस लेवल माने जोठी कि आपनकर सेक्शन वाइज किबा कांसेप्ट वाइज इंपोर्टेंट केसेस प्लस आपनकर लीगल मैक्सिम्स सेगुडा भी हमें कवर करूछु एठी आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस रहउची कि जेतु एटा मॉड्यूल वाइज माने गोटे गोटे सब्जेक्ट गोटे पेपर वाइज हमें कंप्लीट करिवो ईच पेपर पे आपनकर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी एथरे रहउची ओके जो माने जॉइन करचंती क्लासरूम रे तो ऑब्वियसली फैकल्टी संगे डायरेक्टली इंटरेक्ट करि परिबे जो माने ऑनलाइन भी जॉइन करचंती गूगल मीट थ्रू रे आपण जहा भी डाउट्स पचारि परिबे आपनकर वॉइस रे ओके आउ आपनको इंटीग्रेटेड ऐप सपोर्ट भी मिलिबो डिफरेंस कौन रोची जुडिशियल सर्विस बैच रे ओई बैच रे जुडिशियल सर्विस बैच रे एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ा हुए जेंति कि तेरे प्रीलिम्स रो 15000 टा क्वेश्चन अछि जेटा प्रीवियस ईयर रे सब पढिछि मेंस रो 12 वर्ष रो सॉल्व्ड क्वेश्चंस सॉल्व्ड आंसर्स अछि आपनकर सब पेपर्स रो ओके सेटा एप्लीकेटिव एग्जाम ओरिएंटेड सेटा रहउछि और जो भी फैकल्टीज पढौचंती से माने भी एग्जाम को देखि पढौचंती कि हां एई जिंसोडा परीक्षा रे पढिबो वेरएज एही बैचेस रे कोन ना हमें फाउंडेशन टा क्लियर करछु तेनो आरो स्कोप टा बेसी ब्रॉड ठीक अछि आरो स्कोप टा बेसी ब्रॉड तेनो एटा आपनकर जो माने आगु जुडिशियरी देबे ताको पई भी दरकार हबो आउ जो माने जुडिशियरी पे इंटरेस्टेड नांती आपण आगु को जाई कि आपण प्रैक्टिस करिवे लीगल प्रोफेशन रे जिबे किबा अलगा कोनोसी एग्जाम पई आपण इंटरेस्टेड अछंती क्लैट पीजी देबे यूजीसी नेट देबे से सब एग्जाम्स पे जो बेसिक्स उडा आपण क्लियर हवा दरकार सेटा आपण ओके एई बैच रे आपण पाई जिबे सो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज होची सेमेस्टर और फाउंडेशन बैचेस रे पूरा जीरो लेवल रु हमें या भाबी कि चलछु पिला लॉ विषय रे किछि जान नांती ओके सेही हिसाब रे सेठी पढाउछु देन इंडिविजुअल डाउट क्लियरेंस क्लास टाइम रे तो सेठी डाउट क्लियर करिवे आ जदी ता परे आपण डाउट्स असला ताले आपण ऑनलाइन भी कर परिबे सेटा व्हाट्सएप थ्रू रे आ हम ऐप थ्रू रे भी कर परिबे ओके तबरे 24/7 सपोर्ट आपण को रहउची जोडा इन द सेंस जा भी डाउट्स हला आपण व्हाट्सएप थ्रू क्लियर करि परिबे वाईफाई स्टूडेंट वाईफाई आपण को जो पर्यंत इंस्टीट्यूट रो टाइमिंग रहउची आपण जाई कि सेठी ओके स्टडीज वरिका करि परिबे लाइब्रेरी रे तापरे क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपण को रहउची जो जो मॉड्यूल आपण को आपण जॉइन करचंती तार प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलिबो आपण ऑनलाइन रे जॉइन करले भी आपण आसी सेटू कलेक्ट कर परिबे रेगुलर टेस्ट आपण को रहउची आ आंसर राइटिंग ऊपर सेठी फोकस रहबो सो दैट आगु आपण जदी ओजेएस करिका देबे भी आपण एथरे पूरा रेडी है कि रहबे ओके तो डिटेल्स कोन अछि ए पर्टिकुलर कोर्स रो तो
रिक्वायरमेंट आपण जो पर्यंत मते 3 मास पे दरकार 6 मास पे दरकार 3 वर्ष पे दरकार तो आपण डिपेंडिंग आपण को केते टाइम पर्यंत दरकार यू कैन जॉइन ओके एथरे आपणकर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऐप एक्सेस लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जो क्लासटा हैला गोटे दिन पर सेटा पुनी तार रिकॉर्डिंग टा आपन को ऐप रे अवेलेबल तेणु आपन ताको रिवाइज करिया पे चाहउछन से क्लास रे कोन गोटे कुआइतला मो लेखि पारलिनी भूलियली तो सेगुडा सब आपन कर परिबे टेस्ट सीरीज रहइबो आंसर राइटिंग रहइबो आ तार फीस रहउची 2000 पर पेपर किबा पर सब्जेक्ट ओके अब हमें स्टार्ट करूछु एटा एविडेंस एक्ट रु और बीएसए रु भारतीय साक्ष्य अधिनियम रु ठीक अछि 24 तारिख रु एटा स्टार्ट होबो ओके मार्च 24 जो मैंने ऑफलाइन जॉइन करेंगे क्लासरूम रे जॉइन करेंगे से खंडगिरी सेंटर रे जॉइन कर परिबे टाइमिंग आपन 6 to 8 6 days a week वेडनेसडे हमर छुट्टी थाए आउ बाकी सब दिन इंक्लूडिंग संडे भी आपन क्लास रहइबो जतरे टेस्ट भी आपन वीकली टेस्ट करिका भी रहउछ आउ जो माने दूर रे अछंती किंतु कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहउछंती बिफोर गोइंग टू यू नो हायर लेवल एग्जाम्स ताले आपन ऑनलाइन रे भी जॉइन कर परिबे ओके 6 टा रु 8 टा आपन ऑनलाइन रे भी जॉइन कर परिबे राइट ता बाद आपण जदि ओजेएस किंबा अलगा टेस्ट सीरीज करिका देबे ता पई हमर सेंटर्स अछि कटक कटक रे बेसिकली आपण जते टेस्ट सीरीज करिका अछि आपण कटक रे रहउचंदी सेल्फ स्टडी करचंदी कि ऑलरेडी प्रिपेयर कर सारचंदी प्रीलिम्स टेस्ट देबे मेंस टेस्ट देबे तो सेगुडा आपण कटक सेंटर रे दे परिबे भुवनेश्वर शहीद नगर एठी हमर मेनली ओजेएस बैचेस उडा जा सेगुडा कंसंट्रेटेड रहउची भुवनेश्वर शहीद नगर रे आउ एई जो सेमेस्टर बैचेस उडा एटा हमर रहउची भुवनेश्वर खंडगिरी रे टेस्ट करिका जदि देबे तीनटा सेंटर रे जोठी भी आपण दे परिबे ओके सो केमिति जॉइन करिवे 7684054656 सेथरे आपण जॉइनिंग डिटेल्स पाइ जिवे ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट डिफरेंस आउथरे कहि दउची ओजेएस बैच रे हमें स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड से बैच ता रहउची जो थरे कि ओजेएस रे जो टाइप रो क्वेश्चन पडुची ता ऊपर हमें फोकस करूछु फाउंडेशन बैच रे सेटा आपनकर बेसिक लॉ पेपर टाको पूरा वाइड स्कोप रे कवर कराउछ ओके फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहबी कॉन्स्टिट्यूशन रे जुडिशियल सर्विस रे हमर पार्लियामेंट पड़ेनी तेनु प्राय जते हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढौछु ओजेएस पई वी आर नॉट डीलिंग विथ पार्लियामेंट इन डिटेल्स बट फाउंडेशनल कोर्स रे सेटा पूरा डिटेल रे पढाओ ठीक अछि तेनु स्कोप ऑफ फाउंडेशनल पेपर और फाउंडेशनल और सेमेस्टर कोचिंग इज मच ब्रॉडर as compared to your exam specific OJS coaching बुझिपाल सो आई विश यू ऑल द बेस्ट आपनकर जदी फाउंडेशन स्ट्रांग अछि जो भी एग्जाम आपण इजीली क्रैक करि परिबे लॉ रो सेटा आपनकर नेट हो कि क्लैट हो कि यू नो आपनकर एनी अदर स्टेट रो जदी आपण हिंदी भी जानि जंदी ताले नॉर्थ इंडियन जते स्टेट्स अछि सबुरो आपण जुडिशियल सर्विस भी दे परिबे ओके सो बेस्ट विशेस नाउ वी विल कंटिन्यू विथ द क्लास ओके सो नमस्कार ऑल ऑफ यू तो हमें काली टू कंटिन्यू करिवा तो आज तो हमें सेक्शंस टू स्टार्ट करिवा ओके बट बिफोर गोइंग टू द सेक्शंस हमें एविडेंस लॉ जनरल एविडेंस लॉ रो किछटा बेसिक जिंस जानिबा ओके ता भितरु गोटे हला आपनकर मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग द टर्म लेक्स फॉराई ओके के कहि परिबे कोन लेक्स फॉराई माने कोन व्हाट यू मीन बाय लेक्स फॉराई this law of evidence is generally considered to be lex fori okay what do you mean by that lex Law forums. law forum lex is the law and fori okay basically that means the forum ta mane kon अपन केस टा जनरली जोठी हबो ओके जोठी होउची केस टा सेठी आपनकर सेठिकार जो लॉ टा ता ऊपर अप्लाई होउची ओके एटा गोटे जनरल लॉ देयर आर एक्सेप्शंस टू इट बट जनरली स्पीकिंग लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फॉराई जो फोरम रे सेटा यूज हबो सेही जगह रही आपण लॉ टा सेठी यूज करूचंती ओके सेट पे आपण कहउचंती द यू नो इट इज लेक्स फॉराई ठीक अछि सो सेटा हमें सेउठू स्टार्ट करिवा सो हेडिंग दियंतु द कांसेप्ट ऑफ लेक्स फॉराई okay that will be our heading the concept of lex fori
right? So it is the law of the forum. The अर्थ कौन? What do you mean by law of the forum? Okay, ता माने कौन? कोर्ट जोठी अच्छी केसटा जोठी आपनकर होउची, ओके, तारो रूल हिसाब रे, तारो लॉ हिसाब रे आपनको केसटा चलियो। सर ठीक अछि, अंडर जुरिस्डिक्शन मान जोठी केसटा हेइथिबो ता जुरिस्डिक्शन अंडर रे ही केसटा फाइल हो। तारो जुरिस्डिक्शन अंडर रे इन द सेंस दैट जेहेतु आमे एटा एविडेंस लॉ हिसाब रे पढुचु, सेही पर्टिकुलर कोर्ट रे को लॉ ऑफ एविडेंस चलुच। ओके, here we are generally not talking about lex forai, we are talking with respect to your एविडेंस लॉ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेटा लेक्स फराई तक अपन जदि कहउचंती ता माने इंडियन कोर्ट्स रे जदि एटा चालुची ताले एटा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ता आपनकर यूज हो। सपोज केसटा यूएस रे कोठी चलची, ओके, तो सेठी आउ आपण एक्सपेक्ट करिवेनी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से माने यूज करिवे हला। तो जो कोर्ट रे आपनकर केसटा चलीची से को लॉज को फॉलो करूची, ए केस रे को एविडेंस लॉ को फॉलो करूची। ओके, सो कारण कौन आको रखियार कारण कौन? मेनली हैला कंसिस्टेंसी। ठीक अछि, गोटे ब्रॉड ज्योग्राफिकल किंबा गोटे ब्रॉड लीगल जुरिस्डिक्शन भितर जेमती इंडिया भितरे, ओके, कोर्ट्स माने प्राय गोटे टाइप रो लॉ से माने फॉलो करिवे, किछिटा लोकल लॉज को छाड़ देले। ठीक अछि, तो आपनकर केसटा ओडिसा रे हितो कि आंध्र प्रदेश रे हितो कि कोनोसी गोटे ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया रे हितो, नॉर्थ ईस्ट रे कि आपनकर अलगा एरियाज भी आपनकर अछि, ओके, जेमति कि हम लक्षद्वीप करिकाला सेपटे भी, बट लॉ ऑफ एविडेंस विल रिमेन द सेम। ओके, अर्लियर इट वाज इंडियन एविडेंस एक्ट, एबे सेटा रहला आपनकर, ओके, दैट इज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक अछि, तो एटा वाला गोटे फंडामेंटल एस्पेक्ट। ओके, सो धरंतु गोटे किछि अरे डिफरेंस ता कोन? काई एटा तो ऑब्वियस कथा, जोठी केस हबो सेठिकार लॉ हिसाब रे हबो। डिफरेंस कोन एटा काई हमें पढुचु बेसिकली बुझंतु। ओके, कॉज ऑफ एक्शन जदि अलगा देश रे हिच ताहले सपोज से जो एबे से एक्स्ट्राडाइट हबो ना से राणा जे से जो बॉम्बे अटैक्स रे इन्वॉल्व थिला, ठीक अछि, तो यूएस रे थिला केते वर्ष, ताको सेठी अरेस्ट करके रखा हितला। इंडिया बहुत ट्राई करथिला एक्स्ट्राडाइट करिया पे ताको, ऑल्दो इंडिया और यूएस भीतर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अछि, ताको से दो नथिले, एबे काम सरियला तार, ठीक अछि, एक्स्ट्राडाइट कर दियो ताको, तार भीतर तार एक्स्ट्राडिशन हबर अछि। ओके, नाउ सपोज सी प्लानिंग स्कीमिंग एगुड़ा सब करिछि, ओके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करिछि, जहां भी करछि सेटा करिछि यूएस रे। ठीक अछि, किंतु जो टेररिस्ट एक्टिविटी ता हैला इंडिया रे हैला, ताको धरि कि अणा हैला ताको। तो एबे जेतो से इंडियन कोर्ट को फेस करिवो, ओके, किंबा लेट्स से जणे गोटे यू नो लेट्स से फॉर एग्जांपल से गोटे किछि गोटे क्राइम एगेंस्ट इंडिया करिछि किंतु बाहर सॉइल रे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हे वाला कि डायरेक्ट एक्शन किछि गोटे करछि, ताको एक्स्ट्राडाइट कराउछ। एठी कोन आपणकर, ओके, जोठी कॉज ऑफ एक्शन आपणकर इमर्ज करूची सेटा यूएस रे हिच कामटा, ओके, बट केसटा होची इंडिया रे, राइट। तेनु से जगह रे आपणकर यू नीड टू नो दैट द एविडेंस लॉ जनरली इज लेक्स फॉराई। जो फोरम रे केसटा होतिबो किबा जो कोर्ट रे केसटा होतिबो सीए को एविडेंस लॉ को मानुछ। ओके, now सपोज ताको यूएस रे ट्राई कराइता, ठीक अछि, ताको यूएस रे जदी ट्राई कराइता ताले से केस रे कोन हेतांता ना बेसिकली आपणकर यूएस रो लॉ लागि थांता। ठीक अछि, तांकर सेठी जा लॉ अछि, राइट, बट इंडिया रे तारा ट्रायल होछि तो इंडियन लॉज लागि व्हिच इज करेंटली भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस लॉ हमर, बुझि परले। एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो,
जोटा कि आगु जेतले आमे जिबा that we will study. Okay, so take down the law of evidence in general. The law of evidence in general is governed by lex fori. The law of evidence in general is governed by lex fori, comma, meaning that meaning that it is subject to the law of meaning that it is subject to the law of the jurisdiction, meaning that it is subject to the law of jurisdiction where the court is located, where the court is located. Okay, continue. तार कौन दरकार कौन, what is the need of this, what is the importance of this? This principle ensures that, continue, this principle ensures that procedural matters, this principle ensures that procedural matters, including rules of evidence, including rules of evidence, are consistent, are consistent with the forum's legal system, with the forum's legal system. Okay, तेणु जो कोर्ट रे केस होची सेई जगार सेमाने जहा लॉ ऑफ एविडेंस ए केस रे कि मु सब लॉ ऑफ एविडेंस एते कहूची कहीं ना हमें सेई हिसाब रे पढुचु. ओके, अदरवाइज जनरल प्रोसीजरल लॉज भी दे आर आल्सो ओके, किछिटा एक्सेप्शंस को छाडिले दे आर आल्सो लेक्स फॉर आई, माने जो जगह रे जो कोर्ट रे आपन केस चलची सीधा भाषा रे कहले सेई ओके एरिया रो लॉज गुडा जा ओके किंबा सेई कोर्ट जो लॉज फॉलो करे सेई लॉज गुडा अप्लाई हबो. ठीक अछि, कॉज ऑफ एक्शन कोठी अराइज करची दैट इज नॉट इंपोर्टेंट. ठीक अछि, किछिटा एक्सेप्शन सेथरे रहइबो जोडा आको हमें देखिबा. सो नेक्स्ट पॉइंट रे तारी एग्जांपल लेखंतु. फॉर एग्जांपल, for example, if a legal proceeding, for example, if a legal proceeding occurs in India, comma, BSA 2023 applies, BSA 2023 applies, regardless of where, regardless of where the underlying events took place, regardless of where the underlying events took place. Similarly, now the same answer. Similarly, in the US, in the US, the federal rules of evidence, United States, okay, in the US, the federal rules of evidence apply uniformly. The federal rules of evidence apply uniformly across federal courts. Apply uniformly across federal courts. Okay.
across the federal courts. Federal courts kon dekhantu eti, can anyone tell me what is the fundamental difference in the constitution and structure of judiciary in America and India? Ke koi paribe kon amara fundamental difference ta achi? Bahut gude semiti technical difference baharibo. Fundamental difference ta kon? Anyone who can tell me? United States judiciary re au Indian judiciary bhitare fundamental difference ta kon rohuchi? In its constitution, okay, and in its composition, in its structure. United States रो concept कौन कहले? एटी इंडिया रे कौन हमारा integrated judiciary. Okay, हमारा state रो judiciary अलग नो. यही भारतीय साक्ष्य अधिनियम is followed in Madhya Pradesh, is followed in Odisha, is followed all over India. Okay, of course, अपन जानते कि किछटा अपन सेतरे state level amendments करि परिबे. Okay, in many laws that is allowed. Okay, कि आपणकर स्टेट लेवल रे किछि अमेंडमेंट्स आपण कर परियो जोडा कि केवल आपनको स्टेट ऊपर ही लागू हो. बट ओवरऑल फ्रेमवर्क सेम रहउछि देश सारा. बुझि परछन? So at the helm is the Supreme Court of India. Okay, then the high courts of the states, then the lower district courts, and then lower judiciary आपनको रहला. They follow the same rule. There is one constitution. But US रो concept अलगा. तांकर integrated judiciary नु. तांकर 50 टा राज्य, 50 टा राज्य रो 50 टा separate constitution. Okay, आउ गोटे तांकर फेडरल जोटा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए. ओके, आउ तांकर जो फेडरल कोर्ट छुड़ा थिबो सब स्टेट रे. नन टेररिज्म रो इशू हला, दैट इज अ फेडरल सब्जेक्ट. ओके, तो फेडरल कोर्ट रे ट्राई होबो सेटा. किंतु किए का को मार देला माने जेंति हमर एटी लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सेटी भी से जनरल लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. ठीक अछि. सेति पे अपन देखिबे बहुत गुडे राज्य तांकर abolish कर दैछन्ति डेथ पेनल्टी. किछटा राज्य abolish कर दैछन्ति, बहुत गुडे राज्य रे डेथ पेनल्टी अछि सन दउछन. ओके, गोटिए देश रे किंतु डिफरेंट डिफरेंट लॉस फॉलो होछ. तांकर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी नो. तार कारण हैला तांकर सब स्टेट रो गोटे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अछि. 50 टा राज्य, 50 टा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आउ फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए जोडा कि तांकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया रे गोटिए कॉन्स्टिट्यूशन, गोटिए इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. बुझि परछन? सेटा हैला फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स जुडिशियरी और जुडिशियल सेटअप आउ जोटा हमर इंडिया रे जो आपनकर जुडिशियल सेटअप अछि. ओके, बुझि परले? लेक्स फॉर आई कोन ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, sir. Yes, all of you are clear. Okay, fine. Now all of you have your barracks. So lex for I कौन बुझ परले? एटा गोटे फंडामेंटल जिंस आपण जानिबा दरकार. But many laws or mostly with some exceptions all laws are generally lex for I. Okay, so evidence law भी से. तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आपणकर lex for I. But सेतरे गोटे जिंस आपण देखिया जे गोटे फंडामेंटल डिफरेंस अछि. Now we'll start from the sections. Okay, so please have your barracks ready. Okay, so to barrack use करिवे at least generally पढ़िया पे notes words पे ठीक अछि जोडा कि with comments अपन use करिवे भलो. But generally speaking, okay, क्लास रे जो डिस्कशन हबो सेथ पई हमें जोडा कि हमें तो कोन कहू क्लीन barracks जोडा without any comments से गुडा अपन यूज करिवे. तो सेटा डायरेक्टली इंडिया कोड साइट रु ही डाउनलोड कर दे. Or if you have the book ताले बहुत भलो. Okay, depends on you. बहुत पिला एमती होचंदी ए जनरेशन रो जो माने प्रथम रु ही पीडीएफ रु पढी आछंदी. Okay, if it is fine with you ताले, otherwise I would always prefer you bring the okay bare act. और जदी किनिबे bare act माने you want the bare act in printed form, then always go for the bare acts with detailed comments. Okay, almost like a textbook सेटा हे जो किंतु सेटा बहुत दरकार काहे ना सेतरे सब केस रेफरेंस उडा देखबो. बुझि परले? So then let us start.
Let's for I, all of you are okay. So now let us start with your Bharatiya Sakshya Adhiniyam section wise. Okay. So we'll try to complete. आज तो हबनी कहीं ना section 2 रे गुटे definition से बहुत जिन हमको पढ़ा पड़े. Okay. But we'll try 1 to 5. चैनल ताकू टिके ना एनालाइज भी करिया पड़िबो इंडियन एविडेंस एक्ट सहित. ओके सो आपण निजो ये रे देखंतु प्लस मूवी प्रोजेक्ट कर देबी. तो फर्स्ट असला आपनकर सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट. एडी गोटे फंडामेंटल डिफरेंस अछि इंडियन एविडेंस एक्ट संगे पचारि भी सारिला पर. ओके सो सबसेक्शन 1 this act may be called the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. एठी गोटे जिंस देखंतु कोन तार अल्टरनेटिव इंग्लिश ना तो देनी जो जगह भी आपण जो भी आपण स्टैट्यूट देखंतु. ओके फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन रे आपनकर कोन कहउछ इंडिया रो नोमेनक्लेचर बहुत सेतर यू नो पॉलिटिकल जिंस भी हेतला यू नो राइट कि गोटे आइडियोलॉजी कहउछ कि भारत हमें यूज करबा गोटे आइडियोलॉजी कहउछ नहीं इंडिया टा यूज होबो. ओके बट कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहउछ ए दीटा ही होबो इंडिया दैट इज भारत से कहउछ कुछ पहले. So say option दे दीजिए अपन both are you know accepted by the constitution, both are mentioned in the constitution. ठीक है but एटी अपन देखंतु it's not saying that it is Indian Evidence Act 2023 or भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. ते केवल कहूची आ ना हैला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 and since it is lex ferrai आपण इंडिया रे जे कोनोसी कोर्ट रे ये जेबेठू इंप्लीमेंट हैला समस्ते आपणकर एफआईआर रे हो आपणकर कोर्ट प्लीडिंग्स रे हो जहाँ भी हो सबु जगह रे आपको एया ही लिखिया पड़िबो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. इनफैक्ट तमिलनाडु रे अगस्त रे एटा गोटे हेतिला बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली तांकर जो लैंग्वेज इश्यूज रहिछि तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से माने सेटा ओके यू नो इट इज ऑब्वियसली इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ संस्कृत एटा हिंदी रे अछि. ओके आउ तांकर नॉट द पीपल ओके बट द पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ दैट स्टेट जो द्रविडियन मूवमेंट तांकर भारी असुविधा संस्कृत एंड डेरिवेटिव्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेजेस. ओके जिते लैंग्वेज संस्कृत रो डिराइव्ड होइछ ताको कोन कहउछन्ती हम इंडो आरियन लैंग्वेजेस. मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस आर इंडो आरियन लैंग्वेजेस. ओडिया भी से डिराइव फ्रॉम संस्कृत. मराठी ओके जिते गुजराती ओके हिंदी ऑफ डिफरेंट यू नो डायलेक्ट्स सब डिराइव फ्रॉम संस्कृत. तो एगुड़ा इंडो आरियन लैंग्वेज सादर्न लैंग्वेजेस गुड़ा द्रविडियन लैंग्वेज. ठीक है ऑल्दो सेथरे भी संस्कृत रो किछि इन्फ्लुएंस हमें पाउछु बट सेटा लिंग्विस्ट को काम. ओके वी विल नॉट गो इनटू दैट. एटा काई कहली ना से अगस्त 2024 रे ठीक अछि से तमिलनाडु रो गोटे कोर्ट रे से माने लिखिले कोन ना इंडियन एविडेंस एक्ट 2023. तो सेठी तांकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी से कहला हाई कोर्ट भी से कहला सेमिति किछि एक्ट नै इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 बोली किछि भी नै. ओके इट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम राइट. तेणु एटा भी गोटे जिंस आपण बुझंतु आगुरु जो एक्ट गुड़ा थिला सेगुड़ा इंग्लिश रे तार टाइटल्स गुड़ा दिया होतिला. ओके एबे एटलीस्ट ए जो जोटा कि सबु बेले यूज होबो प्रोसीजरल लॉस गुड़ा क्रिमिनल अमेंडमेंट ओके जोटा हैला सेथरे सबुरो इंडियन नेम्स रखा हैला. ठीक अछि एटा एबे केते लोकन को भल लागिलानी कि यू नो आउ जुडिशियरी जनरली इज वेरी कोन resistant to change. Best example है the names of the high courts. ठीक अछि तो बहुत गुडे स्टेट्स रे तांको हिसाब रे ना सब चेंज हिची अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर. हमरो इठी ओडिसा टा ओडिसा ही गला. ओके कलकत्ता कोलकाता ही गला राइट. इलाहाबाद प्रयागराज ही गला. किंतु आपण कहउछन कि प्रयागराज हाई कोर्ट आ ओडिसा हाई कोर्ट रे भी ORISS से लिखा होची. ओके चेन्नई ही गला किंतु चेन्नई हाई कोर्ट कहउछन कि मद्रास हाई कोर्ट. एबे सेटा भलो कि खराब
सेटा आपण निजे भाबिया कथा बट एनीवे किछिटा हमरो ट्रेडिशंस जोडा कि जुडिशियरी चाहेनी चेंज करे एज सच जुडिशियरी चेंज रेजिस्टेंट ठीक अछि गोटे किछि चेंज होबो सेटा को टिके टाइम लागि हठात किनी हबन जोडा कि गोटे सिविल सेटअप रे आपण कर दे पारे ओके तो सी हिसाब रे एठी इट हैज बीन डायरेक्टली डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर कि बा आउ किछि ना नहीं नाटा हबो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ओके सो दैट एवरीवन हैज टू इंटरनलाइज इट जे इंडिया रहइबो ताको तो मानिया ही पड़िबो आपण हिंदी संगे मानंतु न मानंतु सेही इंटरनलाइजेशन हे 5 वर्ष 10 वर्ष परे से जो प्रोटेस्ट गरिका अछि दैट विल डाई डाउन कैन लोक जतल जानि कि भाई जे एडवोकेट अछंती से जगार जे सबू लोक कोर्ट को जाउछंती शीत दिन रे 50 थर बीएसए बीएनएस बीएनएसएस कहउथिबे ठीक अछि सो दिस इज यू नो आर गोटे लीगल एस्पेक्ट तो अछि बट आर गोटे सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट भी अछि एबे डिपेंडिंग ऑन व्हिच साइड ऑफ द आइडियोलॉजी यू आर आपण ताको क्रिटिसाइज भी कर परिबे आपण ताको वेलकम भी कर परिबे हला तेनु one major difference from Indian Evidence Act is Indian Evidence Act जोटा कि इंग्लिश रो जनरल ये थिला एटा कल्चर स्पेसिफिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम कराला सेकंड क्वेश्चन तो ओके इट अप्लाइज टू all judicial proceedings in or before any court including court martials but not to affidavits presented to any court or officer nor to proceedings before an arbitrator ठीक अछि तो एटा इंपोर्टेंट प्रीलिम्स ପାଇଁ ओके जोडा कि कोठी कोठी एटा अप्लाई हबनी सेटा तो गोटे कथा बट एठी आ गोटे चेंज अछि मेजर चेंज जोडा आपण इंडियन एविडेंस एक्ट संगे रे कंपेयर करि परिबे बुझि परले तो लेट मी जस्ट पुट बोथ द ओके सेक्शंस साइड बाय साइड एटा हला हमर भारतीय साक्ष्य अधिनियम रो आ एटा हला हमर इंडियन एविडेंस एक्ट आपण निजे देखंतु आउ मते कहंतु कोनटा डिफरेंस अच्छी व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द मेजर डिफरेंस व्हिच यू फाइंड अंडर दिस एटा सर हला इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया जोटा लिखा हैतला सेटा कोन रिपील हे हां हमें काली जो पढ़िथिलु टेरिटोरियल ओके एक्सपेंशन और इन द सेंस कि एटी टेरिटरी विषय रे किछि कोइ नै एटा देखन नाउ यू कंपेयर दिस टू तळटा हला इंडियन एविडेंस एक्ट ओके ऊपरटा हला भारतीय साक्ष्य अधिनियम राइट सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया सेटा जो देतला सेटा आउ किछि नै ता माने कोन जेहेतु कोन कारण तार सेटा भी हमहु जानियार अछि जेहेतु अपन डिजिटल एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मिसे देले एबे तार ओरिजिन कोठु भी पारे ओके ता माने कोन इन ए सेंस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओके गोटे पॉइंट ऑफ व्यू रु हमें ऐड कर देल किछि कोइन ता विषय it extends to whole of India. It applies to all judicial proceedings in or out any court, including court martials, but not to affidavits presented to court or officer, not to proceedings before an arbitrator. Okay. It clearly eti kuahelani ki this extends to whole of India. Which so eta gote fundamental difference tar अछि तापरे केबे कमेंट्स करिवो इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification in official gazette appoint कोन पई कारण या थिला कि आर गोटे फर्स्ट ड्राफ्ट हेतिला तापरे सेकंड ड्राफ्ट हला फर्स्ट ड्राफ्ट को ओके जेतोले पार्लियामेंट रे प्रेजेंट कराला से किछि बुलबाल बाहरला केटा जिंसस इट वाज टेकन बैक इन द पार्लियामेंट पुनी सेकंड टाइम प्रेजेंट हला सेकंड टाइम ता हम जोटा एबे पढुचु भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिस इज दैट सेकंड ड्राफ्ट जोटा कि बिल हला आ लॉ हला तापरे ठीक अछि सेकंड टा तेणु सेठी गोटे रहिला कि केबे इम्प्लीमेंट हबो खाली इम्प्लीमेंट तो कर देले हबो देन कोर्ट्स उडा भी रेडी हबा कथा ठीक अछि तो ऑल्दो इटा आपण 2023 डिसेंबर अराउंड ओके तार एवरीथिंग वाज डन बट इट केम इनटू इफेक्ट मच लेटर ओके केबे इफेक्ट आसला कल जण कहउतले ओजेएस रे यू नो ओजेएस की जो भी जुडिशियल सर्विस रे एमिति क्वेश्चंस भी पड़े केबे व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स केबे आसला एटा 1 जुलाई 2024 हला एटा टिके मन रख दे 1 जुलाई 2024 रे आसला ठीक अछि काई एते टाइम का लागला कोन डिसेंबर रु जुलाई लाग गला हां
एतिकी टाइम लागिला तार फाउंडेशन टा ओके लोअर कोर्ट लेवल रे एंड कोर्ट लेवल रे रेडी करिया ठीक अछि अंडरस्टूड जहाँ डिफरेंस अच्छी एथरे बुझी पारले समस्ते ओके सो एटा गोटे फंडामेंटल डिफरेंस मन रखंतु आर कारण हैला डिफरेंस रो बिकॉज डिजिटल एविडेंस को आपण गुरुत्व देले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को आपण गुरुत्व देले एबे डिजिटल एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो सर्वर्स रे रहउची प्राय सपोज आपण गोटे एबे दंगा गोटे हे गला कम्युनल क्लैश गोटे हे गला ड्यू टू ए फेसबुक पोस्ट सब सप्ताह गोटे गोटे होची कोटना कोटी जनरली नॉर्थ इंडिया रे हुए ओके साउथ रे ते हुए नी कि ओडिशा रिलेटिवली यू नो वी आर वेरी फॉर्चुनेट एठी ओवरऑल पीस अछि ओके अब जनरली पीस तो रहिबा भी कथा तबरे गवर्नमेंट भी एबे अलगा एक्शन भी नेलेनी जोटी कि हमें डेली आरंभ कलु अवश्य ओडिशा रे दैट इज नाउ द इलीगल इमिग्रेंट्स हु आर वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी एंड डेमोग्राफी ऑफ आवर नेशन बहुत जगह चेंज भी कर देलेनी डेमोग्राफी से मानन को आस्ते आस्ते 10 जन खंड को धराई की पठा होची ओके एक्स्ट्राडेट करा होची बट 10 नो संख्या हजार हजार ठीक अछि पूरा स्टेट रो तो आई डोंट नो बिकॉज मु आगुरु पारादीप रे रहउतली तो सेठी गोटे जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा माने सेठी इनफैक्ट आमर जनरल लोक भी सेठी केबे भी जानतीनी प्राय आजिकल सब डेवलप कराउची एज जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स ओके पूरा पूरा इंटीरियर विलेजेस बीच साइड तो सेठी के लोक ही नांती सेठी बेसी यू नॉट फाइंड लॉट ऑफ पीपल एई खाली तो सेमती गोटे रिजॉर्ट को जाइथिले अराउंड 2-3 वर्ष आगु सेठी घर फर किछि नै बट देयर इज ए ह्यूज बांग्लादेशी सेटलमेंट देयर आउ सेमान तांगर जा सब करंती प्रचार प्रसार चलैछन ओके एटा मु 2-3 वर्ष आग कथा कहतली एटलीस्ट 300-400 लोक तो थिबे तांकर जो जहा भी से करथिले सेट तो इंटेलिजेंस को कोन जाना नै जाना अछि बट ड्यू टू वेरियस रीजंस एक्शन होनी ओके वी आर वेरी फॉर्चुनेट आमर एठी सेमती किछि प्रॉब्लम हेनी किंतु जदि बेसी आपण छाडिबे ताले हबो बट एटलीस्ट गवर्नमेंट एबे टिके एक्शन मोड को आसी पॉलिटिकल रीजंस भी तार था दे आर बिग वोट बैंक ठीक अछि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट बट वोट दिन आम मान भर बहुत जन भोट देवे आम छुट्टी मोर भोटा गाँव रे अच्छी किए जीव गाँव को तापर मुझे यूएस रे अच्छी मुझे जीवी इंडिया को भोट देवाई कि मु बैंगलोर रे अच्छी मोर मु चेंज करिनी बैंगलोर को आनीनी एत वर्ष है कम करोशा रे मोर ओके भोटा अच्छी तो ठीक अच्छे गोटे दिन तो छुट्टी ही मिलगला इन दैट सेंस ओके बट दीज पीपल हु आर इलीगल इमिग्रेंट्स तांकर वोटिंग राइट हवा कथा नुह तांकर सबु प्रकार आधार कार्ड दिस कार्ड दैट कार्ड सबु जक लोक अच्छा करे दौरान ओके एंड दे विल वोट फॉर देम ऑब्वियसली बट आगु को जाए सिचुएशन टा कौन हम दैट वी कैन इमेजिन तो गवर्नमेंट रो भी बहुत एथरे काम करियार अछि ओके इन बेबी स्टेप्स इट इज स्टार्टिंग एंड आम मानकर भी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी अछि कि मु भाई जोठी भी थाए हाँ जदि मु बहुत दूर रे अछि ताले लेट मी शिफ्ट आपण तो जोठी भी दे परिबे ना वोटटा ऑफ कोर्स सेति कि आपण रेसिडेंस सेठी थिबा दरकार इलेक्टोरल रोल जो चेंज होची चेंज कर दियंतु आपण एबे आसी कि आपण गाँव रे रहउनांती आपण संबलपुर रे रहउचंती कि कटक रे कि भुवनेश्वर रे राउरकेला रे रहउचंती चेंज कर दियंतु टेक इट सीरियसली पुर तो जाई कि चेंज करिया पे पड़ने ना आजिकली ऑनलाइन ही जाउची तो सही रेस्पॉन्सिबिलिटी टा जदि एजुकेटेड लोक न नेबे ताले एई मन जो सब बाहरु आछंती ए माने बहुत प्रॉब्लम्स आगु को कर देबे एंड a time will come when you will have to depend on them for services ठीक अछि बहुत गुडे अपार्टमेंट्स रे भुवनेश्वर रे ओके मजरे 2-3 मंथ्स आगु एटले कमिश्नरेट पुलिस सेटा चेक कला किछटा जगह जना पड़ला कि माने दे आर बेसिकली फ्रॉम बांग्लादेश बट से माने आधार कार्ड होइका करिकि से माने दे हैव इनफिल्ट्रेटेड इनटू योर होम बुझिपाले तो जो माने अपार्टमेंट से वरिका रहउचंती जस्ट इमेजिन जो लोक आपनकर काम करची ही इज फ्रॉम बांग्लादेश से किए से स्लीपर सेल भी हे पारे से तांकर आईएसआई रो एजेंट भी हे पारे वी डोंट नो राइट तेणु लॉ अच्छी कि आपण जहाँ कम रखिए भेट करेबे निजर पुलिस स्टेशन रे किए करोच किंतु राइट बिकॉज दीज आर तो आम एक्ट पढ़ीदेबू यहाँ तो आप बही रे भी अच्छी पढ़ी दे पारे बट देयर आर सर्टेन थिंग्स स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ लॉ यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके एंड इफ पॉसिबल नीड टू एक्ट ऑन इट ओके तो एनीवे
एटा हला आपन सेक्शन 1 एटा मेजर डिफरेंस रहला कि एठी आपन आ मेंशन कलेनी कि दिस एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया तार मेन कारण हला कि आपन जो एविडेंस उडा आपन को रहउछ म कहतली जो दंगावरी का होची फेसबुक पोस्ट रिलेटेड if there is any communal violence related to any social media post where is the server where that particular data is kept इंडिया रे बहुत कम जने रखुछन ओके फेसबुक हैला गूगल हैला ताको संगे तो झगड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है ना कि भाई तुमे डेटा उडा सब रखुछ यूएस रे कि अलग को जगह सिंगापुर रे कि आ कोठी इंडिया रे रखुनो तेणु जदि आपण लिखि देले इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया ओके ताहले सेठी असुविधा हबो काहे ना से डाटाटा तो अलग जगह रखाई जेतेबेले से डेटाटा अणा हबो ओके ताहले डिफेंस कहि पारे कि भाई हमर तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं ऊपर ए डेटा तो इंडिया रे ही नथिला आपण बाहर कोठु आणछन इट विल बी लाइक फॉरेन एविडेंस आगु जोटा हमें पढ़िबा एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम अब्रॉड तार रूल कोन ठीक अछि फॉर एग्जांपल से जण के इंडिया रे मर्डर करी यूएस पळेला ते आसुनी कि यूके पळेला ताको गवर्नमेंट भी बेसी हमको सपोर्ट करूनी ओके तो सेठु हमको एविडेंस आनियार अछि तो हमें जासूस पठेलु से ताकू ओके मारी बसी तक तो आनी हबनी तो तार ब्लड सैंपल नहीं पळे आसलो ठीक अछि तो सही टाइप रो सिचुएशन सब हबो ऑब्वियसली सेटा वेरी दैट वुड बी ए वेरी वीक एविडेंस बुझ पाले सेहित पई जेतु डिजिटल आउ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अपन इंक्लूड कर देले जो गुडा स्टोर प्राय होची बाहर देश रे सेथि पई आपण एठी इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया जनरली देना बुझ पाले कारणटा काहे कि दिया हलन तो सेक्शन 1 इज क्लियर समस्ते यू नो किछि डाउट्स नहीं कार सेक्शन 1 ऊपर राइट लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेक्शन एटा टिके हमको आस्ते आस्ते जे पड़ियो कानाडा डेफिनेशन से ओके लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस आर गिवन मे बी खाली डेफिनेशन को आउ इलस्ट्रेशंस आर गिवन गोटे जिनस सब मन रखिए आपणकर जो एग्जाम रे पड़ुची प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो भी स्टैट्यूट रु पड़ू कॉन्ट्रैक्ट रु हैला लिमिटेशन रु हैला जो एनी स्टैट्यूट सब बेले देखिए दैट इज in 99% cases just copy paste from illustration निजो मनरु जनरली कोनसी बोर्ड दियंतनी इवन दिल्ली जुडिशियल सर्विस करी करी भी देखिबे से माने कोन करनी ना से इलस्ट्रेशंस गुडा नै कि ताको एक्सट्रापोलेट करी कि आपनकर प्रॉब्लम क्वेश्चन दियंती मध्य प्रदेश रो भी से ओके बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन दर ओके मध्य प्रदेश रो भी दिल्ली रो तो आपण देखि क्वेश्चन डर जे कि बाप रे ये कोन जे नो सेंती बट इफ यू गो थ्रू इट अरे इटा गोटे पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन ऊपर बेस्ड अछि सेही आउ दि तीनटा जिंस ऐड कर दिचन तेरे बट फंडामेंटल हैज बीन टेकन फ्रॉम द इलस्ट्रेशन इन द बैर एक्ट तेनु जहा जहा इलस्ट्रेशन दउची एटा भलरे पढिबे इलस्ट्रेशन पूरा आपन को क्लियर होबार अछि तारी ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आसे फ्री रे ओके आउ मेंस रे जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आसीबो ठीक अछि that will be related to that okay प्राय मु कहूँ तो come to section 2 dealing with definitions in this adhiniyam unless the context otherwise requires okay courts include judges and magistrates and all persons except so court रो definition रा exception देला तो सेठी कहि छी आपनकर सेक्शन 1 रे कि एटा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पई हबनी ओके एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स legally authorized to take evidence so any all persons who are legally authorized to take evidence okay for example आपण क्वेश्चन पढ़ला ओडे कमीशन फॉर्म इज the commission okay किछि you know evidence ऊपर किछि इंसो नै okay let's say केमती हमर थिला कोन नानावटी कमीशन have you heard of नानावटी कमीशन कोन पे सेटा कमीशन तको अपॉइंट कर रहितला नानावटी कमीशन okay various different riots and all okay जो हमर गोधरा riots करी का हेतिला and some other तांकर terms okay
ऑफ रेफरेंस TOR जो कमिशन करबा फॉर्म हुए गोटे टर्म ऑफ रेफरेंस दिया था। अच्छा ओडिसा रो इंपोर्टेंट कमिशन सब जानछन्ती आपण एडा भी टिके जानिया कथा ओके लीगल अवेयरनेस हिसाब रे राइट सो जस्टिस नायडू कमिशन सुनी छन्ती केबे नाटा सुननांती ठीक अछि लेखंतु जस्टिस नायडू एमती बहुत कमिशन अछि तो जस्टिस नायडू कमिशन कोन पई फॉर्म हेतिला ओके मते काली क्लास रो बिगिनिंग रे कहला ठीक अछि व्हाई वाज जस्टिस नायडू कमिशन फॉर्म एंड से तांकर मोर हिंट दे दूची से तांकर रिपोर्ट ता बहुत आगुरु दे देथिले प्रीवियस गवर्नमेंट को ही दे देथिले गवर्नमेंट केबे ताको पब्लिक कलानी करंट गवर्नमेंट जेतले आसिला से कहथिले हमें पब्लिक कर देबो ओके बट आज पर्यंत करना बिकॉज द content or let's say that matter was so sensitive or is so sensitive okay कि गवर्नमेंट को देखि चाहिँ चले पे पड़छ काली जो मैं एग्जांपल दोथली नेताजी कर फाइल्स ओके दैट मींस हाउ व्हाट हैपेंड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस right anyway so any statute which gives power to any person to legally take evidence सीए कोर्ट रो डेफिनेशन रे जीवो तेनु जदि गोटे कमिशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट अंडर रे गोटे कमिशन टे फॉर्म हेची सेठी दिया हेची ताकू पावर किसे एविडेंस नहीं परिबो तो सीए भी कोर्ट रो डेफिनेशन रे जीवो बुझि परले तो अंडरस्टैंड द डेफिनेशन प्रॉपर्ली जजेस मैजिस्ट्रेट्स तो ऑब्वियसली ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस ओके तो सेथरे लेट्स से जदि पुलिस ऑफिसर्स भी रहिले ओके अदर्स भी रहिले जो माने जहां को कोनोसी गोटे स्टैट्यूट ओके ऑथराइज करिछि किंबा लीगली देयर बाय लीगली माने कोन इट मे बी बाय लॉ एंड लॉज आर ऑफ वेरियस टाइप्स लेजिस्लेशन हेई पारे ऑर्डिनेंस हेई पारे लॉट ऑफ अदर थिंग्स मे बी आल्सो देयर सो लीगली से माने ऑथराइज्ड अछंती एविडेंस नॉट ओके सेटा हला फर्स्ट आपनकर 1A that is the definition of court exception to it is arbitrators okay and it includes all other persons okay who are legally authorized to take evidence this is clear now come to B conclusive proof concept ता कोन एते तो हम देखिबा टाइप्स ऑफ प्रूफ हमें देखिबा ठीक अछि conclusive proof कोन ठीक अछि आउ तापरे types of proof रे हमें that we will see but एबे खाली definition to just go through it को proof ता को आपण रिबर्ट करि परिबे को proof ता रिबर्ट करि परिबेन presumptions करिका सेगुडा हमें देखिबा केते प्रकार रो कोन अछि but एटी come to B conclusive proof means when one fact is declared by this adhiniyam to be of conclusive proof of another the court shall on proof of the one fact regard the others as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. So we will see the concept of proved, disproved and not proved. Okay. But एटा आगे प्रथमे बुझंतु conclusive proof माने कोन राइट सो जदि आपण ए अधिनियम रे जा कुआउची कि गोटे ओके फैक्ट जदि conclusive proof of another okay so that means the other fact is proved okay tahale according to this adhiniyam court will not allow okay shall use कराइज okay तो legal जो नुआ अछंती legal terminology रे will और shall भितर गोटे major difference अछि ठीक अछि just like english usage कोन के कहि परिबे will और shall भितर legal language रे हमर legal terminologies रे will और shall रो difference कोन Shall means mandatory provision ही जाउछ सर हां generally speaking आपण कहि परिबे shall is mandatory obligatory ठीक अछि आ सेतर voluntariness किछि न थाए माने एटा बाध्यतामूलक ठीक अछि तो जदि आपनकर गोटे कंक्लूसिव प्रूफ गोटे फैक्ट ओके ए अधिनियम द्वारा कंक्लूसिव प्रूफ ओके डिक्लेयर करा होची कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर ओके तो जदि गोटे फैक्ट प्रूफ हे जाउची
ओके ताले अदर फैक्ट्स जोड़ा आ संगे रिलेटेड थिला तो they are also proved. Okay, the court shall regard the others as proved also. And अलगा से जो अलगा कौन सी फैक्ट को ओके डिस्प्रूव करबा पई अलाउ करिवेनी कौन सी एविडेंस अलाउ करिवेनी राइट सो एटा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट स्पेशली जेतेबेले हमें कन्विक्शन को जाउछ काहे कि ना हमें जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहूछु जदी कोर्ट को कौन सी डाउट नहीं कि एई लोकटा ही अक्यूज्ड ही ओके से क्राइम टा करिछि ओके कोर्ट ताकू जनरली कन्विक्ट करिवेनी सेपई हमरो कन्विक्शन रेट इवन इन केसेस सेगुडा यू नो इट्स नॉट वेरी हाई ओके काहे ना जदी टिके भी लागिला कोर्ट को कि नहीं एटा गोटे हमरो कंक्लूसिव प्रूफ एटी ओके आउ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ हमरो रहउनी ओके बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड दैट द अक्यूज्ड ओके हैज डन दिस क्राइम ताले ताकू कन्विक्शन हबो नहीं ओके बुझी पारले सो एई कांसेप्ट ता बुझिबा आपनकर बहुत दरकार गोटे छोटो डायग्राम रे हमें बुझी परबे ठीक अछि सपोज देयर इज फैक्ट 1 ओके आउ फैक्ट 1 is related to fact 2 3 और 4 ठीक है तो suppose court declares that fact 1 okay will be the conclusive proof for 2 3 and 4 okay now जदि आपण गोटे फैक्ट प्रूफ कर दे ओके यू प्रूफ 2 यू प्रूफ 3 यू प्रूफ 4 ताहले जना पड़ला कि फैक्ट 1 इज प्रूफ ओके आउ कोर्ट विल नॉट अलाउ एनी एविडेंस जोटा कि ताकू डिस्प्रूव करिया पे ओके जदि किछि ट्राई करा जाउछ तो कारण कौन कारण है जदि कंक्लूसिव प्रूफ इट हैज बीन प्रूव्ड कंक्लूसिवली ओके एंड द अदर पार्टी इज अलाउड टू डिस्प्रूव इट ठीक है इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम इट विल क्रिएट लॉट ऑफ एम्बिग्विटीज इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन तामाने कौन इट इज अ वेरी बिग स्टेप तेणु ए जो कंक्लूसिव प्रूफ कोर्ट बहुत भाबी चिंती की आउ बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट्स पास कला परे ही ओके देयर आर द टेस्ट्स ऑफ conclusivity okay certain tests are there of conclusivity तेणु conclusivity test once सेगुड़ा सब positive रे आसेला then only court will say that okay this is like conclusive proof under BSA हैला तो से जो टेस्ट करिका जतला में टाइप्स ऑफ प्रूफ एंड ऑल विल गो that we will study okay mostly next class से काली ही सेटा देखिबा हम okay तेणु एबे जस्ट खाली हमें बेयर एक्ट रो कॉन्सेप्ट रो बुझु बेयर एक्ट रे कोन लिखाई okay so this is what is conclusive proof this is one of the strongest forms of proof okay आउ जदि conclusive proof रहउची ताले आपनकर क्रिमिनल केसेस करिकारे कन्विक्शन पई ओके आपन को जहां भी हेले conclusive proof दरकार so that there will be no doubt in the mind of the court reasonable doubt beyond reasonable doubt जो concept था that also we will see so एथरा हमें कौन पढ़िबा what are the tests of conclusivity okay that we will see when we go to this particular subsection okay एटी कौन कहउची one fact is declared by this adhiniyam as conclusive proof of another तो अच्छा how will that one fact be declared by this adhiniyam there has to be some tests for it ठीक अछि तो सेटा हमें देखिबा right so next C and D दिटा जाक एक संगे हमें देखिबा
जोड़ा कहूली प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड आउ नॉट प्रूव्ड ओके सिंपल भाषा रे कहले आपण बुझी पारथिबे प्रूव्ड माने आपण सेटा कोर्ट को गोटे फैक्ट को आपण ओके प्रूफ कर दैचंदी ठीक अछि कि कोर्ट नाउ नोज दैट यस दिस हैज हैपेंड दिस फैक्ट हैज बीन प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड माने तार उल्टा गोटे फैक्ट को एटा भूल एटा हेइनी नेगेटिवली आपण प्रूफ कर दैचंदी ओके ताको कोर्ट देखला परे जानउची कि हां एटा हला डिस्प्रूफ सपोज प्रोसिक्यूशन कहूची कि अक्यूज्ड एही समय रे एही डेट रे क्राइम करथिला अक्यूज्ड तार हजार प्रकार आलाबाई अछि ओके सीसीटीवी फुटेज आणुची गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन रु कि गवर्नमेंट एयरपोर्ट रु कि एटीएम रु कि गोटे पब्लिक एनी पब्लिक प्लेस ठीक अछि फॉर एग्जांपल होटल से बसी कि सेही टाइम रे आउ गोटे राज्य रे तार ब्रेकफास्ट की लंच खाउछ ठीक अछि आउ ता सहित गोटे सर्टिफिकेट भी अछि जोडा हमें देखिबा काली हमें जोडा क्रिटिसिज्म रे देखथुलो से सीसीटीवी फुटेज सहित गोटे सर्टिफिकेट भी अछि फॉर एग्जांपल कि एटा टेम्पर हेनी ठीक अछि डिस्प्रूव हे गेला सेटा प्रोसिक्यूशन जोडा कहउतिला कि ये क्राइम सीन रे थिला क्राइम करथिला दैट इज डिस्प्रूव ओके कोर्ट जोडा कंसीडर करके देखिबे कि एटा क्लियरली जणा पड़छ एटा नुह ओके सो दैट इज डिस्प्रूव सो प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड आउ तापर आसीला नॉट प्रूव्ड समथिंग व्हिच हैज नॉट बीन प्रूव्ड और नॉट बीन डिस्प्रूव्ड ठीक अछि प्रोसिक्यूशन कहउची ये थिला सेडी ये आनी कि सीसीटीवी फुटेज देखौची कि मो गाड़ी से दिन गोटे टोल गेट रे पास कला जोठी कि सेट यू नो सेटा गोटे राज्य रे एंड व्हाटएवर तुमे चलउठलो कि नहीं सेटा जाना नहीं ओके सो इट हैज नीदर बीन प्रूव्ड नॉर इट हैज बीन डिस्प्रूव्ड तो सेटा हला नॉट प्रूव्ड तो ए जो डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड केसेस रे ही आपनकर ओके प्रूव हे परलन ओके आउ ए जो नॉट प्रूव्ड this is the biggest reasons for acquittal of most of the accused in criminal cases proof ही नहीं ओके substantial proof आपनकर नहीं जति की proof हबा कथा lack of proof ओके conclusive proof actionable proof नहीं सेटा so although everyone has seen that someone has committed a murder केही को किछि कहू ना सीसीटीवी फुटेज बहुत ग्रेनी अछि जणा पडनी किए से ता मुह जणा पडनी ओके ना प्रूव हैला ना डिस्प्रूव हैला एटा भी प्रूव हे परलानी कि ना ये से लोक नुह तो ना प्रूव हैला ना डिस्प्रूव हैला तो कोन होबा सेटा दैट इज नॉट प्रूव ठीक है तो एटी अवश्य सीरियस डिस्प्रूव कथा कहूछ disproved in relation to a fact means that after considering the matters before it okay এটা important after considering the matters before it माने court पूरा analysis कला परे the court either believes that it does not exist okay तो एटा हला first thing it does not exist or so this is first circumstance or first आपण कहि परिबे okay disprove होवार ingredients जदि हमें कहबा कि the fact does not exist okay तापरे or consider its non existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist okay एटा कोन सिंपल भाषा रे कहले गोटे तो फर्स्ट रे सेटा श्योर अछंती कि एग्जिस्ट करूनी सेकंड केस रे ओके it probably does not exist ethically okay prudent man कोन ये ठीक ठाक ओके गोटे कॉमन सेंस जार थिबो तो सीए ए भाबी कि जदी चलिबो कि यू नो एटा हबा पॉसिबल ओके नुह राइट and he must be having some reasoning for that first one और second one रे difference कोन first one is absolute माने that court is sure that it does not exist second one is probabilistic ठीक अछि probabilistic कोन ना probability बहुत अछि कि सेटा exist करूनी ओके तको आमे जदी लिखिबा परीक्षा रे आमे कोन वेरिएटर लैंग्वेज घोसी कि लिखिबा बट आई हैव टू से टेस्ट सीरीज रे तो ताको रिजल्ट कहीं बाहर नहीं आज बारियो को टेस्ट सीरीज रे बहुत पिला थिले जो माने एग्जैक्टली वेरिएटर लैंग्वेज लिखुथिले माने दे मस्ट बी हैविंग एलिफेंटाइन मेमोरी ठीक अछि अदरवाइज जदी आपनकर सेमती एलिफेंटाइन मेमोरी नहीं ताले कांसेप्ट ही लिखिबे ओके either it does not exist okay or
there is high probability that it does not exist. ठीक है, probability is high. Second part ta saya कहूँ. So in that case, that is disproved. That fact is disproved. Okay. Next आसिला तो आपण कोन देखिले ना disprove देखिले, conclusive proof देखिले. Okay. Next document को आसंतो. So here also very किछि एटा major changes हिची. कोन major changes? Electronic ou digital records usage. Okay, so let's see. Document means any matter expressed or described. आपन प्री रे at least गोदिटा क्वेश्चन ए सब any statute रो definitions रो आसी. Okay, expressed or described or otherwise recorded upon any substance. Okay, तो ये सब डॉक्यूमेंट हिसाब रे जीवो. तेनो धरंतु आपण कहिबे कि गोटे इनस्क्रिप्शन 1000 वर्ष पुराना इनस्क्रिप्शन. ओके, लेखा हिची पत्थर ऊपर सेटा डॉक्यूमेंट अंडर रे जीवो कि. ओके, ये जो अदरवाइज रिकॉर्डेड माने एक्सप्रेस ही नहीं कि डिस्क्राइब ही नहीं, इनस्क्राइब ही सेटा पत्थर रे इनस्क्राइब ही. अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस, on upon any substance. So it may be metal, it may be stone. हिस्ट्री रे आपण पढिथिबे आगुरु जो सब कॉपर प्लेट्स थिला ओडिसा रे कि इंडिया सारा कॉपर के राजा माने से माने कोन करथिले कि छोडा ऑर्डर एबे तो आपनकर ईमेल रे ऑर्डर कि आपनकर यू नो थ्रू इंटरनेट ऑर्डर्स पाउचंती, राइट. बट सेठी ऑर्डर उडा केमति दिया होतिला थ्रू. ओके, दिस कॉपर प्लेट्स. ओके, तो एनी substance, okay, recorded upon any substance. So that substance may be metal or normally आपनकर जहा जहा सब थाए. Okay, जब ये पेपर वरिका by means of letters, figures or marks or any other means. Letter, figure, marks the कोइच plus any other means, ठीक है, apart from letter, figure, marks or by more than one of those means. So letter भी अच्छे, mark भी अच्छे, letter भी अच्छी, figure भी अच्छी. Okay, you go to this कौन ता कुछ कोनती Indus Valley seals. Indus Valley seal रे अपन देखिए कौन letters अच्छी आउ figures अच्छी. Okay, they did not know how to write. तांकर जो script टा आम भलिया माने संस्कृत भलिया नथिला. Okay, तांका पर जो वैदिक पीरियड असला तांका भलिया नथिला. But से माने letters use करचंदी. Okay, figures use करचंदी. They although they had a pictographic script. You know, their script was basically made of different types of pictures, pictograms ताको कहते हैं. Okay, or more than one of these means. अच्छा, एटा हला केमिति को फॉर्म रे डॉक्यूमेंट ता रखाई. So the definition of document has two parts. In the first part, it tells you about the form of document. डॉक्यूमेंट ता को फॉर्म रे अछि, पत्थर हिकी अछि, इंस्क्रिप्शन रे अछि, गोटे पेपर रे अछि, गोटे ताला पत्र रे लिखा हिची. ओके, जेंति कि आपनकर लॉर्ड जगन्नाथ कर मादळ पांजी, ठीक अछि. इट इज रिटन ऑन लीव्स. विल दैट बी अ डॉक्यूमेंट? ऑफ कोर्स इट विल बी अ डॉक्यूमेंट. ओके, बिकॉज़ एनी सब्सटेंस कोची आउ सेडा लेटर्स और मार्क्स शीट रे अछि. ओके, तो नंबर 1, the form of the document, the form in which the document has been kept. हैला, एटा पॉइंट 1 रे लिखिबे. तापर देखंतु एगुडा जो बेयर एक्ट रो एथुरु आपन को पॉइंट्स काढी के नोट बनाबे पे पड़िबो. ओके, जोडा कि मु कहि दउची प्लस आपन को ऐप रे यू विल गेट द डिटेल नोट्स. आजि रो क्लास 2 काइना हमें आजि रु स्टार्ट करिचो. ओके, सेक्शन वाइज. बट मु ए जो पॉइंट्स रो लिखुची तारो एक्सप्लेनेशन उडा आपन को मिलि जिवो सेथरे. Okay, or you can अपन निजे भी कर पारे भलो आपन को टिके भी रिसर्च हे जिवो आउ you will be more ready for the exam. Okay, so it first form of the document intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. Okay, and includes electronic and digital records. So form of documents. Next, purpose. Okay, को पर्पस रे सेटा को पर्पस माने नॉट द एक्सप्लिसिट पर्पस माने एटा रिकॉर्ड करके रखा हबो. ओके, इंटेंडेड टू बी यूज्ड
ତେଣୁ actually use ହେଇନି, intention ଥିଲା ଆଗକୁ use ହବ, okay, intended to be used or may be used, ଯୋଉଟା use ହେଇଛି actually କଣ ପାଇଁ, what would be the purpose of the document, for the purpose of recording that matter, okay, so purpose of the document to record whatever is तार जहाँ content ଅଛି ତାକୁ record କରିବା, whatever the content is there, to record the content, okay. और third जोटा की change है Indian Evidence Act रू, that is it includes electronic records and digital records, okay, electronic records and digital records. Now my question is, what is the difference? Electronic records और पुनी अलगा पुनी कहिला digital records, ता माने किछि तो difference थिबो ना. Electronic record कोन, digital record कोन? Yes, can anyone tell me? Do you know electronic record और digital record भितर difference कोन? जी दीटा दी सेम तले काहे कि लेखिला सेमती? Yes, anyone? Just think about it. अच्छा, मोर example दोच. You know what is semiconductor? ठीक अछि. तो आपण जदि किछि गोटे सेमीकंडक्टर डिवाइस रे गोटे किछि गोटे सेव हिच, ओके, स्टोरेज हमर केमती होची सेमीकंडक्टर सु जनरेट, राइट, सेठी गोटे सेव हिच, ओके. आ गोटे लेट्स से गोटे क्लाउड रे किछि सेव हिच, यू नो क्लाउड कंप्यूटिंग आजिकली असलेन सेटा, तो क्लाउड इज बेसिकली आल्सो सेम थिंग, ओके, बहुत गुडे बड़ बड़ स्टोरेज डिवाइसेस से स्टोर होची, हार्डवेयर रे स्टोर होची, बट आपन को जेतु एक्सेस ता तार मिलुची गोटे सीमलेस एक्सेस, आपन तो क्लाउड भाबुचन, आपन फोन रु ही डाउनलोड कर दोचन, ठीक अछि, बहुत बड़ बड़ फाइल्स 5 GB 10 GB आपन फोन रे स्टोर हे के रहउनी, स्टोर होची क्लाउड रे. व्हाट इज दैट क्लाउड? दैट इज बेसिकली, ओके, सेटा भी गोटे स्टोरेज डिवाइस, नॉर्मल स्टोरेज डिवाइस, बट आपन को एक्सेस मिलुची ताको विदाउट एनी वायर और सिम, ओके. सो अगेन स्टेबल सब जिंस रहउची. सो एथि मेन डिफरेंस आपन को the level where the access is done, okay. So digital records कौन होची, आपण गोटे व्हाट्सएप चैट को तारा गोटे स्नैपशॉट नहीं कि पठौछन, ठीक अछि, सेटा डिजिटल एविडेंस कहला. बट सेटा जो सर्वर रे स्टोर हे कि रहिछि, यू नो हाउ इट इज सेव्ड 10 फॉर्मेट रे, बाइनरी फॉर्मेट रे, सेटा जोटी एक्चुअली सर्वर रे सेव हे कि रहिछि, गवर्नमेंट जेतबेले और कोर्ट जेतबेले असर्टेन करे, आपण प्रूफ देले सेटा कि ये मते या कहितले व्हाट्सएप रे, दिस इज द स्क्रीनशॉट, इट इज द प्रूफ. कोर्ट कोन आपण को प्रूफ रे रिलाय करिवे ना, कोर्ट व्हाट्सएप को कहबे ए दिन ए लोक आगु कोन कहितला सेटा मते दियन, किए कोठु दबो, तार से स्टोरेज डिवाइस रो सेउठु से एक्सेस करिके दबो. दैट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. What you did was example of a digital record, ठीक अछि, because you don't have access to the actual storage, you don't have access to the actual data, आपण पाके जोटा अछि आपण देले सेटा, राइट. तो टेक्निकली स्पीकिंग ताकर मेजर डिफरेंस सेटा रहउछ, ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करी करे कि एक्चुअल स्टोरेज डिवाइसेस रे सेठु आपण जेतले बाहर करछन ताको आपण इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हिसाब रे देखोछन, ओके. सो बट जदि आपण सेटा as an end user, you just have access to that data only, information only, not the raw data, okay. ताहले in most cases सेगुडा आपण digital, okay, records ताको कहउछन. एटा गोटे एग्जांपल. Another example would be, let's say photo, you have clicked a photo, also photo टा आपण पठे दैछंती, you have transmitted it through WhatsApp or something to someone, okay, और से ताको प्रूफ हिसाब रे कोर्ट रे देखौछ. अच्छा, फोटोटा एक्चुअली सेव कोठी हिच, ओरिजिनल जोटी सेव हेतला आपन को फोन रो मेमोरी रे, ओके. सो कोर्ट विल आस्क कि सेटा को एनालाइज कराई कि मते दिया जाओ कि सेटा ठीक कि नहीं, कि एटा जोटा कि व्हाट्सएप प्रूफ ता दोचंती सेटा ठीक कि नहीं, बुझि पारले. तो डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेरी थिन लाइन, ओनली थिंग इज दैट ओरिजिन ऑफ द स्टोरेज, ओके. जोटी आपण एग्जैक्टली जोटा ओरिजिनल स्टोरेज रो आपण नै कि आउछंती, ओके, जोटा कि ऑब्वियसली जहार जो माने द इंटरमीडिएरीज, ए जो फेसबुक हैला, गूगल हैला,
इंस्टाग्राम है टेक्निकली आम कौन कहूँ आईटी एक्ट अंडर रे दे आर डिजिटल इंटरमीडिएरीज ठीक अच्छे से माने यू नो डाटा बाटा रखुंट लोकंर राइट एंड इफ द लॉ एजेंसी से माने मागुचन से माने प्रोवाइड करेंगे बुझिपारे सो इफ यू सी हियर व्हाट आर डिजिटल रिकॉर्ड्स तो सेथरे हमर इलस्ट्रेशंस रे आपण पाई परिबे सब इलस्ट्रेशन आगुरु हमर इंडियन एविडेंस एक्ट रे थिला ओके खाली लास्ट एबे ऐड हेछि जोटा पर्टेनिंग टू डिजिटल रिकॉर्ड्स आउट टिके डिटेल रे ऐड हेछि ओके लेट मी जस्ट पुट दैट इन illustrations okay take a look. So a writing is a document you have written on anything paper or whatever ठीक अछि अच्छा let us say someone you know has been assaulted ताकू की ओडे गुली मार देकी से गोटे गुली मार के पळी छि and before dying से ग्राउंड रे ता रक्त रे लिखि देकी जाई छि लोकडा या करछि किबा कांथरे लिखि देला okay that will be a document written okay on any medium any surface hela so any writing on any type of surface is a document okay tapare second illustration ta dekhantu words printed lithographed or photographed are documents lithographed kon lith mane kon ଆପଣ ancient history की history तो पढ़ी थिबे ना lithograph okay lith graph means no graphy you know writing and all okay lith माने stone okay lith माने stone तो lithograph माने कौन anyone who can tell me what is the meaning of lithograph hint तो दे देली graph is the study writing okay lith means it's a kind of stone okay lith like अपना paleolithic mesolithic neolithic कहउचंदी okay so lithograph what is lithograph अपन देखिचंदी केबे लिथोग्राफिक प्लेट किंबा गोटे लिथोग्राफिक ओके what you can say गोटे लिथोग्राफ जदि अपन देखिबे that you will understand that जो सरफेस ऊपर ओके लेखा होची लिथोग्राफ टा हेची ओके से दीटा generally they don't mix together okay or gel together okay so लिथोग्राफ टेक्निक्स बेसिकली आपनकर को माने यूज करंती जो माने आर्टिस्ट स्पेशली मॉडर्न आर्टिस्ट जो माने राइट तो एथरे कोन हुए ना यू नो दैट ऑयल एंड वाटर ठीक अछि आपन यदि ऑयल पकेबे वाटर से कोन करियो से अलगा गोटे लेयर ही कि ऊपर को पळे आसीबो किबा से जा भी से आपन जानि परिबे एटा ऑयल एटा वाटर ओके एथरे भी सेम कांसेप्ट आपनकर यूज होछ राइट just a minute I'll be back okay so lithograph तो सेटा देखिबे lithographed or photographed तो सेगुड़ा भी सब डॉक्यूमेंट जो टॉकिंग अबाउट लिथोग्राफी ओके यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ ए lithograph okay let me put a picture of a lithograph ताले आपण जान परियो सेटा और बेटर तो लिथोग्राफी रे कोन ना बेसिकली ताकू बहुत रीयूज करी हबो ठीक अछि जो आपनकर जो माने
आर्टिस्ट माने से माने कौन करती गोटे गोटे टाइप रो डिजाइन की पेंटिंग जोड़ा कि सब बेले से कॉपी करके दे पारे ठीक अच्छे तो सेगुड़ा को लिथोग्राफी प्रोसेस रे से माने करती सो दैट इज जनरली लिथोग्राफ okay this is an example of a lithograph so it is kind of a form or something जोटा कि सब बेले आपण ताको पुनी यूज करि परिबे okay that is lithograph or photograph so any photograph that is also a document right तापरे a map or a plan that is also a document कहीं कि आपको डॉक्यूमेंट टाको एक्सप्लेन करिया पे पड़छि कि एते भलरे डिफाइन करिया पड़छि कहीं ना आगु जतले आपण प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस सेगुडा देखिबे ओके सपोज अ टेररिस्ट यू सी दिस अजमल कसाब व्हेन ही वाज कॉट ता कोन सब मिलथिला तार ता पाखरु so there was detailed map of different places छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रो थिला केतेटा होटल्स रो थिला ओके किछटा जूइश कैफेस गरी कर थिला and lot okay he was caught but तारो जदि से धरा पड़ना था तारो आउरी सब टारगेट्स थिला ठीक अछि so a map or plan is a document an inscription on a metal plate or stone is a document okay so which we were discussing metal plate की stone रे आपनकर सेटा भी गोटे document okay a caricature is also a document you know what is caricature cartoon की किसी गोटे सेमती आपण ड्रा करचंदी that is basically okay a caricature right जेमती कि आपनकर देखिबे सब न्यूज़पेपर कॉलम्स रे आसे ना फेमस यू नो कार्टूनिस्ट एंड पेंटर्स से तांकर दियंती caricature तो caricature टा भी डॉक्यूमेंट हो ओके आउ एटा ऐड हला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स ईमेल यू नो व्हाट इज दैट तो आपण आपण ईमेल पठेजन से ईमेल टा भी आपनकर डॉक्यूमेंट अंडर रे आसीबो सर्वर लॉग्स व्हाट यू मीन बाय सर्वर लॉग लॉग माने कोन इट्स काइंड ऑफ इंडेक्स जो सब एंट्री हेता है जेंते हम कॉल आपण फोन रे कोन कॉल लॉग अछि को समय रे केते ड्यूरेशन पई काहा को आपण कॉल करले सेटा आपण पाई परि काइंड ऑफ इंडेक्स ऑफ ऑल द कॉल्स यू हैव मेड तो सर्वर लॉग्स भी सेमतिया को आईपी एड्रेस रु एई सर्वर को एक्सेस करा हिची एई सर्वर को ओके कोन के किछि डाटा पठेइची डाटा रिसीव करची सेगुडा सब लॉग्ड हेकी थिबो माने गोटे काइंड रो इंडेक्स बनै की गोटे काइंड रो नोट बनै की से रखिथिबो ओके सर्वर टा तो सपोज मु गोटे टेररिस्ट वेबसाइट को एक्सेस कली ओके तो ता सर्वर लॉग्स रे रहिबो कि हां ये एई आईपी एड्रेस इंडिया रु ओडिसा रु ये एक्सेस करथि ओके देन डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स ठीक अछि ये सब भी डॉक्यूमेंट्स अंडर रे जाउछ ओके तो आपण गोटे पीडीएफ रखी चंदी कि जो प्रकार फाइल रखचंती ओके लैपटॉप रे हो स्मार्टफोन रे हो डेस्कटॉप रे हो एनी अदर टैबलेट और ओके जो थरे भी हो सेथरे आपणकर सब गुडा डॉक्यूमेंट्स हिसाब रे राइट तो एठी कोन ना दिस इज बेसिकली ऑन कंप्यूटर्स एस लगे देला जो एनीथिंग व्हिच इज नॉट ए लैपटॉप और स्मार्टफोन इथरे जाउछ दिस वाज एक्चुअली इनिशियली एटा भी गोटे केस रे आसीथिला कि से टैबलेट तो लेखा हिनी तो कोड कहले सेटा ओके इट विल बी इंक्लूसिवली कॉन्स्टिट्यूट मींस कंप्यूटर्स अंडर से सब जाउछ हैंड हेल्ड कंप्यूटर की जहाँ भी आप 1000 प्रकार कहि परिबे ओके आप कहले लैपटॉप लेखा हिच बहुत लोग कहबे कि भाई मोर तो लैपटॉप नो मोर सेटा कोन माने गोटे हाइब्रिड की कोन जहाँ भी हो सब कंप्यूटर्स भीतर जीव राइट तापर मेसेजेस ठीक अछि एंड दिस इंक्लूड्स योर एसएमएस टाइप ऑफ मेसेजेस व्हाट्सएप इंस्टेंट मेसेजिंग रो ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेसेजेस ओके वेबसाइट्स राइट लोकेशनल एविडेंस जोटा आप लोकेशन कहउचंती ओके एबे जो आपनकर लेट्स से गूगल रे आपनकर लोकेशन सर्विसेस अछि आपण स्विगी जोमाटो मगौचंती समस्त आपनको लोकेशन सर्विस यूज करचंती लोकेशन एविडेंस इज वेरी इंपोर्टेंट कोन पई
ना एई पॉइंट रे एई डेट रे एई समय रे ता मोबाइल टा सेठी थिला ठीक अछि तो सेटा जदि लोक कहूँ कि मु सेठी नथिली सेटा गोटे एविडेंस हे पारे एंड वॉइस मेल मेसेजेस ओके तो वॉइस मेल रे भी जदि किछि रखा हैला तो जने कि आपन को गोटे वॉइस नोट पठेला कि फोन परे जो वॉइस मेल मेसेज आसे पर्सन इज नॉट अवेलेबल यू लीव योर मेसेज आपन ताको सेतरे जा भी ओके मेसेज दवा कथा दे दैचंती सेटा भी एविडेंस ओके stored on digital devices what do you mean by digital device definition कौन हो digital रो okay where the data is stored okay digitally in forms of 0 and 1 ठीक है all are documents तेणु पूरा स्कोप टा वाइड कर दीची ओके सब जिनस एथरे से इंक्लूड करूची कौन पई करूची ना आगु को जाई कि सेई गुडा एविडेंस भलिया यूज हबो all these electronic records okay so remember the difference between electronic records and digital records okay electronic records basically सेटा हला जोडा origin level रे आपण रखुछन और digital records जोडा कि आपण यूजर लेवल रे जनरली ओके जोडी कि you do not have access to the raw data okay so सेटा ही गोटे जिंस तार रोच ओके so एटा हला तार illustration any doubts in this ट्री रो केते गुडे क्वेश्चंस आपण एथरे एक्सपेक्ट करि परिबे you can expect questions on this in the pre exams okay आज भी जेतो हमें देखिबा today we will write one एबे टिके हमें किछटा कांसेप्ट जानिलुनी तो हमें लिखि परिबा एबे so we'll write a short 5 marks question ठीक अछि 5 marks question पे केते मिनिट दिया हो 5 मिनिट so we'll write one so it will be half page खंड and then as usual 5 टा हमें okay questions हमें देखिबा based on what we will study today एतिकी कार डाउट अछि कि anyone having any doubt related to this so Sir, now come to the कौन sir, I'm a bit confused between electronic records and digital records. Doesn't does a electronic record not count as a digital record anyway because it's stored in binary and stuff form like that? digital means binary right electronic record also you know see how the thing is stored in a semiconductor right it is the same thing that actually we should not go into the technical details मुझे technical details कहबी ताले maybe you know it will be like you see आपनकर जो semiconductor devices let's say आपण hard disk use करछन hard disk रे data केमिति store हेकि रहउछ ओके मैग्नेटिक टेप रे डेटा केमिति आजकल तो यूज करना कि बेसी बट मैग्नेटिक टेप रे केमिति आपनकर फ्लॉपी डिस्क आउट जो सेतर केमिति स्टोर होछ राइट यू नो नीड टू नो द प्रोसेस रे दरकार नै एते एथिकली हमर ओवरऑल व्यू पई जानियार अछि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ओके बेसिकली जोडा कि रॉ डेटा मींस द ओरिजिनल डेटा जोटे एक्सेस हे करूछ okay which is normally जेतना हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहूछु मोस्टली कोर्ट विल आस्क इट फ्रॉम द original okay a person having authority on the original storage space okay जेमति कि से फेसबुक हैला कि से व्हाट्सएप हैला ताकू कहला a digital record is anything that you present which is digitally stored आपन को लैपटॉप रे हिताउ okay so for example मु कहली ना आपन गोटे फेसबुक रु गोटे इमेज टे मु डाउनलोड कर देली ठीक है डाउनलोड तो करछि फेसबुक रु ओके ताको एतले केतले वेरीफाई करिया पे थिबो कोड को तो से फेसबुक को पचरिबो whereas मु जोटा यूजर लेवल रे मु जोटा डाउनलोड करली आई डोंट हैव द एक्चुअल स्टोरेज ओके मु मो डिवाइस से डाउनलोड कर देली सेठी मु स्टोर कर देली राइट बट इट इज अ कॉपी ओनली ना ओरिजिनल तो नो ना ओरिजिनल तो जो थरे सेव हेची ठीक अछि सो व्हेन द कोड आस्क्स सेमन तो कंपेयर तारी संगे करिवे ओके सो सेटा को आपण गोटे इन अ वे यू कैन से दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सेमिति डिफरेंस किछि नै okay difference is at the use level और गोटे पॉइंट रो डिफरेंस हैला ओनरशिप ऑफ द ओरिजिनल स्टोरेज स्पेस जो जगह रे ओरिजिनली सेटा स्टोर हेतिला आपन को पाखे से जो स्पेस रो ओनरशिप अछि तो से ओनरशिप से इंटरमीडिएरीज को पाखे रहइबो बुझि पाले मो डिजिटल रिकॉर्ड इन द सेंस कहूची कि मो पाखे जो जिंसटा अछि मु सेटू डाउनलोड करली ताको फॉरवर्ड करी 10 जण ओके
So mo case रे that photograph will be a digital record. All right, sir. Thank you. Okay, electronic and digital record रो difference टा आपण सेही हिसाब रे ताको देखन. Okay, now let us go to the next part, which means एटा कोन कहला एटा खाली document रो definition देला. Now let us go to evidence. What is meant by evidence? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहउचंती आगुरु इंडियन एविडेंस एक्ट कहउतले तो एविडेंस रो डेफिनेशन कोन. फर्स्ट क्लास रे हमें किछटा जनरल डेफिनेशन हमें डिस्कस करथलु. एबे स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ता ओके देखिबार अछि. तो जदी पढिला एविडेंस ऊपर यू हैव टू राइट दैट. फर्स्ट जनरल जोटा कि वर्किंग डेफिनेशन हमें देखथिलु फर्स्ट क्लास रे सेटा को देखिबे. तापर लिखला परे देन यू हैव टू गिव दिस. Okay, which is the statutory definition, which is given in your statute. All statements, including statements given electronically, which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. Okay, so say differentiate कर देला आपनकर एविडेंस को ओरल आउ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस भीतर. तो ओरल एविडेंस कौन कहूची. ओके, बेसिकली एनी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिकली गिवन स्टेटमेंट्स. तो एठी जोटा स्टेटमेंट जोटा कोर्ट को दिया होची किए दोची बाय द विटनेस. ओके, केतेबेल दोची जतरो कोर्ट ताको परमिट करचंती किंबा तार रिक्वायरमेंट अछि. ओके, जेहेतु से गोटे विटनेस ताको सेही मैटर रे कोर्ट सामने रे तार ओके टेस्टिमोनी ता दबार अछि. आउ जा इच्छा कहि परिबन, जहाँ भी कहबो सेटा रेलेवेंट हवा कथा. जो हमें रेलेवेंसी आगु को देखिबा. ओके, इट शुड बी रिलेटेड टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी. ओके, सपोज गोटे मर्डर हेची अगस्त 2024 रे. से कहूची कि मु जुलाई 2024 रे वियतनाम जाइथिली बुलिया पे. ठीक अछि कि मु सब मास जेबे जे मते बेसी टेंशन हे जाय मु थाईलैंड पळाय. ठीक अछि, एग्जांपल दोची. Okay, I'm not talking about any particular politician. I'm just giving a normal example. Okay, so relation to matters of fact under inquiry माने जो विषय रे केस ता चली छी. ओके, सेही रिलेटेड कहबो कोर्ट अलाउ करथिबे किंबा तार रिक्वायरमेंट थिबो एज ए विटनेस. इफ ही इज ए लिस्टेड विटनेस ताले ताको तार टेस्टिमोनी दो पड़िबो. ओके, and all those evidence are called, all those statements are called oral evidence. Okay, all those evidence are called oral evidence. A different types of evidence question के पड़ जाए 5 मार्क रा. तो स्टैट्यूट हिसाब रे दीटा हिसे कहूची गोटे ओरल एविडेंस गोटे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस. बट एज यू नो आपको टेक्स्ट बुक रे बटुकलाल करी करे 9टा 12टा टाइप रो देछि. ओके, देखिबा सेटा once we go to those places. एबे खाली हम डेफिनेशन से देखु. ओके, बुझि परले एटा all statements including statements given electronic ता माने कोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ओके, you know that during this जो कन्विक्शन हैला आर तो माने सेटा सेमिति दरकार नथिला. बट मेनी एविडेंस ओके दिया हिची, बहुत गुडे एविडेंस दिया हिची वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू रे. ओके, recently kichita you know that some people were convicted of the Sikh riots के हेतिला 1984. ओके, 1984 रे हेतिला. तो सेतबेले जो आई विटनेस माने देखि दिले, नाउ मेनी ऑफ देम आर इन कनाडा एंड अदर प्लेसेस. से माने आसी परिबेन इंडिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे देचंती तांकर टेस्टिमनी. सेति पई कन्विक्शन हेची एबे एते वर्ष परे भी. बुझि परले. सो any statement which has been also given electronically. Otherwise धरंतु विटनेस आपनकर जे लेट्स से विटनेस अछि से गोटे प्रोटेक्टेड जगह रे रखचंती से सेउ टू कोर्ट को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहि दे परिबो. ओके, कि मो या देखतिली एंड these are the things and all. किंबा गोटे अक्यूज अछि. ओके, तार लाइफ की बहुत रिस्क अछि. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू रे तको से जेल रु ही ओके से तार जा एविडेंस दा कथा रे परिबो. Okay, so eta basically it relates to witness. Okay,
तो विटनेस इलेक्ट्रोनिकली भी दे परिबो ऑब्वियसली कोर्ट रे आसी भी दे परिबो तो सेडा गला आपन को ओरल एविडेंस ओके तो एविडेंस एबे जो बीएस रे ऐड हला इलेक्ट्रोनिकली भी जो देथिबे ताको ओरल एविडेंस भी आपन मानि परिबो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू रे ओके नाउ एडा गुडे क्वेश्चन कैन ए प्री रिकॉर्डेड okay can a pre-recorded video uploaded on YouTube or sent to the court pre-recorded live no court पचारि परनांती question advocates पचारि परनांती question okay suppose गोटे witness important witness अछि गोटे case रे ता ऊपर बहुत pressure पड़ला से गोटे YouTube video कर देला सब जिंस से थरे कह देला and then he killed himself suicide कर देला right से जो pre-recorded video टा और recorded video टा ताकू आमे इलेक्ट्रॉनिक ओके और एविडेंस हिसाब रे एठी नहीं परिबा कि नहीं ओके तार एडा गोटे केस लॉ अछि बट एटा आपनकर सेकंड काम ठीक अछि सो यू राइट डाउन व्हाट यू विल टेल मी टुडे टुमारो एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास फर्स्ट तो हला जस्टिस नायडू कमिशन कोन पे एटा हितला ओके सेटा कहबे मते ओडिसा दिस इज रिलेटेड टू ओडिसा ओके तापरे नेक्स्ट हला एटा कैन recorded statement recorded माने recorded video statements okay be considered as oral evidence ठीक अछि ए दिटा मते खाली कहबे बिफोर वी स्टार्ट तो एटा हला फर्स्ट तो एटा ओरल एविडेंस विषय रे आपण कहले now come to documentary evidence so all documents including electronic or digital records produced for inspection of court and such documents are called documentary evidence so these documents जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक हो इंक्लूडिंग डिजिटल और फिजिकल भी हो कि जहाँ भी डॉक्यूमेंट डेफिनेशन रे जहाँ आपण पाइथिले ओके फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट और गोटे एग्जांपल हम दे परिबा यू नो अबाउट क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया रे केतेटा क्लासिकल लैंग्वेज अछि जानछन कि कहि परिबे हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया एनीवन क्लासिकल लैंग्वेजेस सो गोटे लैंग्वेज को गोटे क्लासिकल लैंग्वेज हबा किंबा से मान्यता पाइबा इज डिफिकल्ट लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी प्रूव ओके संस्कृत है पर क्लासिकल लैंग्वेज technically speaking yes but not declared as a classical language by government of India किंतु संस्कृत रो derived Indo-Aryan languages अछि okay and Odia is the only Indo-Aryan language एबे भी आउ दि तीनटा को इंक्लूड करछन से माने initially all the Dravidian languages की south languages that is your Tamil Malayalam Kannada and Telugu सेगुड़ा क्लासिकल लैंग्वेजेस थिला संस्कृत न थिला ओडिया प्रथम इंडो आरियन लैंग्वेज जहाँ को क्लासिकल स्टेटस दियाला एबे आउ केतेटा ओके अदर लैंग्वेजेस हैव बीन गिवन दिस ईयर एंड लास्ट ईयर ठीक अछि क्लासिकल लैंग्वेज प्रूफ करिया पई lot of history you have to prove of that particular language ओके बहुत हिस्ट्री प्रूफ करिया पड़िबो तो ओडिसा रो जो टीम टा हितला जे कि सेटा प्रूफ कले जाय कि lot of people were there in that तो से माने सेमती बहुत गुडे photographs of these you know stone carvings and you know मादला पांजीरो and other कि हमरो एई लैंग्वेज रो इतिहास ता एते पुराना अछि ओके तो सेटा हे गला दैट तापरे ओडिया वाज द फर्स्ट इंडो आरियन okay language to be given the you know to be declared as a classical language ठीक अछि there was a case related to it okay जोठी एटा कुआ गला कि से जो फोटोटा यू नो मे बी मॉर्फ हेची ठीक अछि सेति पे ओडिया को दियाबा कथा न सेठी कोर्ट कहले कि नहीं फोटोग्राफटा को सेटा डॉक्यूमेंट हिसाब रे ही नि हला ओके तो से हिसाब रे कहली कि फोटोग्राफ्स करिका सेगुडा भी आपन कर डॉक्यूमेंट्स अंडर रे जीवो जोडा कि आगुरु भी आपन कर कुआइछ ओके स्टैट्यूट रे
right? So देखिए सेटा, these are certain things which you should also know. Okay, at least आपनकर 1000 वर्षर इतिहास थिबा दरकार से लैंग्वेज पे. Okay, how it has to be proved independently. बुझी पाले तो आगुरु आमर से कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज नथिला, एटा जो 2000s रू स्टार्ट हेज. So okay, basically all these languages were okay there. The Charta Dravidian language thila, and of course Sanskrit was also there initially. ଆଉ ତାପରେ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଟା ପ୍ରଥମେ ସେଟା ହେଲା. I don't remember the year, but it was after 2010, because 2010-11 ରେ ସେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା କଣ that particular movement was going on. तो ताप किछि परे पाइले, you can just check केबे से पाइछंती. आउ लास्ट ईयर आउ किछिटा लैंग्वेजेस को इंडो आरियन लैंग्वेजेस को दिया जायतिला. Okay, Marathi for example, आउ भी केतेटा को दिया आइछे, I don't remember all. Okay, तो सेटा त माने इंडो आरियन लैंग्वेज हिसाब रे ओडिया was the first, not considering Sanskrit, कहना Sanskrit the mother language. ठीक है, तो Sanskrit was the mother language, right? आउ प्रथमे जोटा सबुटू आपण कहि परिबे क्लासिकल लैंग्वेज जोटा प्रथमे डिक्लेयर हेतिला, that was I think Tamil. Okay, Tamil ta you know, many scholars, independent scholars also now believe that not the current Tamil, but one form of Tamil, okay, was the first or the most ancient, okay, language in India. Sanskrit tapare asila. This comes from the fact that you know, Indus Valley civilization ta history sange related. The Indus Valley people were racially they were basically negritos, mane African, black here. So when these Aryans they came, okay, so Aryan invasion theory aguru को होउतला, एबे सेटा Aryan कोन ट्रांजिशन थ्योरी कि माइग्रेशन थ्योरी को होउतला. Aryan जेते माइग्रेट करले से माने धळा लोक दिले, तनसो रशिया, सदर्न रशिया पागा पागी सेउट सब आस्थिले. आउ से माने घोड़ा फोड़ा रो यूज जानथिले, से माने आयरन रो यूज जानथिले, केते वेपन सब तांकर भलो थिला. तो एठी जे आसी पहुंचले, and lot of people, I mean they took over the land, right? You know, Mohenjo-daro पढिथिबे सेटा हिस्ट्री तार येटा कोन माउंट ऑफ द डेड asile कोठु. Okay, so lot of things are Vedic, you know, inscriptions are also there. Vedas रे भी बहुत गुडे जगह रे अछि. For example, Lord Indra जे कि सबुटु important god थिले Vedic period रो, माने ऋग्वेदिक period रो. So Lord Indra तांकर आ गोटे ना भी दिया अछि पुरंदर. Purandar means destroyer of forts. के फोर्ट उडा कोठु आसला. Generally believe that maybe they have destroyed the forts of these people. तो एमाने पळे आसला नर्मदा रो साउथ को. Okay, आउ सेठी तापर तमिलनाडु and other those places हला. तो एटा lot of history is there. So anyway, okay, मु काई एते कथा कहली ना, सी केस रे से जो photographs to prove that Odia language रो हिस्ट्री टा 1000 वर्ष रु पुरुना से गुडा यूज करा हितला, एंड जेतले मैटर कोर्ट को गला, कोर्ट also accepted that. बुझि पाले. So all documents including electronic or digital records produced for the inspection of court, it has to be produced for the inspection of the court. Court सेटा मगेबे किंबा आपण एविडेंस हिसाब रे, आपण एविडेंस लिस्ट हिसाब रे सेटा कोर्ट को सामने रे देबे. ठीक अछि. So that is called documentary evidence. Okay, then so evidence माने बुझिले. So जदि question आपण पडिला what is evidence, the working definition देकी you have to write this in your own words. Always remember, आपण निजे बुझंतु कांसेप्ट ता तापरे निज भाषा रे लिखिबे. ठीक अछि. तो you don't have to write bare act language. Okay, आउ समय नष्ट करिवे सेगुडा मन ने रखिया पे, तार इंपोर्टेंट कंटेंट उडा मन रखिया अछि. बट सेही भाषा रे लिखिबे, जदि लिखि पारुचन तो बहुत भलो कथा, if you have that kind of memory. Okay, next come to fact. Okay, what is fact? Fact means and includes anything, okay, konosi jinso, anything, state of things, okay, माने से जिनसोटा को स्टेट रे अछि, that is also fact. Relation of things capable of being perceived by the senses. Okay, आपण जोटा सेंस रे आपण को परसीव करि परिबे, देखि परिबे, फील करि परिबे, okay, smell करि परिबे, right, touch करि परिबे, perceived by the senses.
राइट आपणकर किछि एक्स्ट्रा सेंसरी ओके जदि आपण फैक्ट प्रेजेंट करछंती मोस्टली सेटा कोर्ट एक्सेप्ट करिवेन ओके सो कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस ठीक अछि सो सपोज यू नो हैव यू हर्ड द नेम दिस बाबा भंगा हाँ सुनिछंती किछि ना एमथे लोकर किछि ओके Yes, और sir. किछि ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन भाई कोन prediction पे so suppose let's say I become you know a baba and I will tell you that आपणकर रैंक 3 अछि ओके ओजेएस रे रिजल्ट दि 3 दिन रे बाहरिबो आपणकर रैंक 3 अछि ठीक अछि will that be a fact जो टाइम रे मु कहली रिजल्ट बाहरिनी ओके कैन इट बी a fact आपणकर रैंक 3 अछि it should be you should be capable of being perceived by the senses एटा मु कोन केही भी देखि नांते सपोज no one knows it is very secret ओके ना मु टच करली ना मु फील करली ना मु देखी ना मु सुनी ना मु स्मेल करी तो एटा फैक्ट हबो कि नहीं फ्यूचर प्रेडिक्शन कैन इट बी ए फैक्ट इट कैन नॉट बी ए फैक्ट बिकॉज ठीक अछि आपनकर सुपर सेंस किछि गोटे थाई पारे सिक्स सेंस बो जणा कोंती बट एटा कोर्ट रे सेटा चलीबन ठीक अछि तापरे आउ कोन इंक्लूड करिवो एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच एनी पर्सन इज कॉन्शियस ओके तो सेटा भी फैक्ट रहइबो एनी मेंटल कंडीशन okay of which any person is conscious that will also be fact okay our illustrations देखले माने उडा कोन it will be clear so come to the illustrations there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact मु जेतले आसीली मोर पांचटा पेन अछि पांचटा पेन डिफरेंट कलर्स रो ओके मु तांको रखि दिली मो पेन स्टैंड रे मु जेतले जस्ट मु जेडे काम पई बाहर गली आसिला बरे आउ के नांदी करे तो मु ओपन कला बरे ऑर्डर ऑफ द पेन हैज चेंज्ड रेड टा प्रथमे थिला रेड टा थर्ड हो जाई ओके सो दैट इज ए फैक्ट राइट एटा मु कहि पारि ता माने कि ओडे पॉजिटिव घर भीतर ओके certain objects arranged in a certain order in a certain place okay that is a fact that a person heard or saw something is a fact anything which is perceived by sense something heard something saw okay smelled something ठीक अछि felt something ये सब जीव क्षेत्र that a person said certain words is a fact how will you know he said a fact said certain words you have heard it okay that a person holds a certain opinion has a certain intention acts in good faith एगुडा सब एग्जांपल का रो state of mind mental condition certain opinion okay ए एबीसीडी कॉलेज ता भलो कि खराब जबी certain intention जदि मते केबे यू नो opportunity मिलिबो ताले मु एई जिंसटा किंबा आ संगे एया करबी कि एमती कर देबी ठीक अछि intention acts in good faith ठीक अछि तो गोटे लोकटे मु जाउची से रास्ता रे पड़ची ओके द एक्सीडेंट इज कोन इज इन गुड फेथ आई हैव टेकन हिम टू हॉस्पिटल ठीक अछि मोर इंटेंशन हला ताको सेव करिया बट मु गाड़ी रे ताको रखी कि नेली जतले मे बी मु टिके एकाई दिली तो ताको जेमती उठा टाणी टुनी गाड़ी रे रखिली तो तार सेतर किछि हार्म हे गला ओके तो मोर किछि लायबिलिटी एला टॉर्च करि के आपण पढिबे ठीक अछि गुड सैमारिटन लॉ राइट सो एक्ट्स एनी एक्ट इन गुड फेथ और fraudulently okay उल्टाटा भी हे पारे malicious intention ठीक अछि fraud किछि fraud involved अछि so all these pertain to state of mind okay fraudulently or uses a particular word in a particular sense okay particular word particular sense see many words have different meanings double meaning triple meaning बहुत प्रकार अछि okay suppose गोटे particular word अछि which is derogatory to a particular community but say word ता अलगा सेंस रे भी यूज करी होछि सेम वर्ड ता आपण को सेंस रे यूज करछन को कॉन्टेक्स्ट रे यूज करछन सेटा भी फैक्ट हबो
ठीक अच्छे जदि आप नॉर्मल सेंस रे यूज कले ठीक अच्छे जदि आप सही सेंस जोटा कि डेरिवेटिव ताको यूज कले तो जाना पड़ जो तो सेटा भी दैट इज आल्सो फैक्ट और is or was at specified time conscious of particular sensation is a fact right तो मु बसथिनी ओके मत लागला कि ओटा छुंची रे फोड़ देछि ओके स्पेसिफाइड टाइम रे मु बसिछि कॉन्शियस अछि ओके जानिछि पर्टिकुलर सेंसेशन हैला तो कि गोटे मते फोड़ी देला कि मते बहुत माने गरम लागिला स्किन की ओके पछ देखला को निया लग जाइछि तो these will be facts specified time conscious of a particular sensation so इगुडा सब गला आपनकर ए लास्ट जोडा एग्जांपल्स देला any mental condition of which any person knows kichita or capable of being perceived by the senses okay so these are the certain illustrations okay so we will stop here if you have any doubts you can ask then we'll write a short question जोडा मु कहली 5 marks रो question okay means 5 minutes आपनको नबार अछि so short note data write a short note on the concept of lex forae with respect to भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ओके एबे टाइम केते हला 8:52 8:53 धरंतु सो 5 मिनिट्स 8:53 to 8:58 okay write it and send it to me I'll send you voice notes okay बेसिकली हाँ केमिति लेखुचंती ठीक अछि तो हेडिंग्स रहइबो पॉइंट्स रो सब हेडिंग्स रहइबो 5 मार्क क्वेश्चन तो डायग्राम दरकार नहीं बट यू शुड नो हाउ टू मेक अ डायग्राम हैला so please start I will mute my mic okay and then we will discuss the MCQs of what we have studied today okay please start writing 8:58 okay we will be back
Okay, fine. Your time is up. So now let us go to. So you have written. Now let aku lekhi ki matlab pathebe. Okay. You take your time and write. Now let us go to our MCQs of today's class. First question na dekhantu. Does the BSA apply to proceedings before an arbitrator? So already we have seen that. Okay, it has an exception. That is, it will not No, apply. B. B will be the answer. It will not apply to, okay, proceedings before an arbitrator. Okay. Now come to the next question. Which of the following is not considered a document under BSA? देखो कोटा हबो. C. C. All are sure. Now अलगा कोन कार differing answer जदि अछि. Yes, you are correct. C will be the right answer. Okay. कहीं ना सेट से clearly कहूची कि spoken conversation. Okay. So that is not included under the definition of document. Right. Third question देखो. What does conclusive proof imply under BSA? B. B. B for Bravo कहउछन्ती. That is correct. Okay. B is the correct answer. The fact is accepted as true without allowing evidence to the contrary. Next, which of the following scenarios does not constitute a fact under the BSA? So this is an easy one. D. Okay. Yes. Hypothetical situation. Okay. केबे भी सेटा गोटे. Okay. Not possible to be. So D will be the answer. Now come to last question. Okay. Under BSA, which of the following is considered evidence? B. A witness statement made in court, that is evidence. Okay. There is a catch in it. Okay, so I'm going to tell you. It is judge's personal knowledge of a fact. Right. Judge's personal knowledge of a fact, will it be brushed aside? Suppose the judge knows that, suppose the judge was on a flight. Okay. And the accused was on the same flight. Judge has seen him. Now, personal knowledge. Okay. Right. So in that case, what will happen? So exceptions, judge karo personal knowledge of a fact. Okay. Personal knowledge iti kono rochi na अन्य माने के जान नथिबे प्राय अन्य माने के जान नथिबे आपण जानथिबे सेटा हला पर्सनल नॉलेज ठीक अछि इन पर्सन यू नो दैट ए जिंसटा हेछि कि हेनि ओके so are there some exceptions to it that we will see but okay that answer is B witness statement made in court okay that is considered as evidence got it fine then we'll stop here okay and tomorrow we will continue okay section 2 da as I told you, I'll go very slow because this is the fundamental. Fundamental statute. Okay, upon the law,
आपण क्रिमिनल कि सिविल लॉ पढ़िबा आगु प्रॉपर्ली आपको एविडेंस लॉ टा पढ़िया पड़ियो कारण से थरी आपण दीटा जाको ओके जहाँ भी क्रिमिनल कि सिविल लॉज प्रॉपर्ली एप्रिशिएट कर परियो राइट सो देयर इज नो रीजन टू रश थ्रू जिनसटा भलरे पढ़िबे किछिटा अननोन एस्पेक्ट्स भी हमें एनालाइज करिवे अकॉर्डिंगली फाइन ओके सो वी विल स्टॉप हियर देन we'll meet tomorrow again Thank you, sir. thank you namaskar